एक बुकलेट दिखाना मुझे। All are connected. Start. Good evening, class. So, my name is Shakil Ahmed. Those of you who have not seen the cover page, and I have been teaching RC section of CSAT for a very long time, and there is not much to teach here, in fact. So, RC में as such कोई इतना lecture नहीं होता. But there are certain points that you need to know, and then practice, and when you go through the questions, you evaluate the options, you start learning on your own. Theory का part बहुत थोड़ा सा है, right? And it's not new for anyone. Let me make a few disclaimers here because most of the students are online. तो अगर मैं कोई बात, in case I'm going to say something in Hindi, so those students who do not understand Hindi should not get confused or should not get panic. I will not say anything which is important in Hindi only. I will always say that in English. तो अगर मैं कभी कुछ, if I say something in Hindi, you can assume that कि कोई unimportant सी बात थी. Okay, so आपका कोई ज़्यादा loss नहीं होगा. ये disclaimer है. Now, let me know how many of you have written this paper before. Appeared in 2024. Okay. Yes. How was RC section? It was good. Okay. So where you missed it? It was paper 1 or paper maths? But maths was comparatively easy, isn't so? आपको tough करने की आदत बन गई. अच्छा. You too wrote. Your take on RC? If I say I was only dependent on the comprehension only part, the CSAT. Because the maths and basic part was very not so. तो RC आपका अच्छा ही गया होगा, I think so. So did you miss it by whiskers or there was a bigger margin? Sir, I got 62 marks. CSAT. 62. Okay, you please. I had attempted 43 questions out of post 80 questions. And in my GS paper, in the first paper, the correct number of questions was 56 to 59, based on the various answer keys. Basically, CSAT, I will recommend just go to RC only. Okay. Lots of questions from reasoning and maths part I did correct. But RC was an issue. Yeah, RC was. Okay, it was an issue with you. And who else? Who appeared in the S24? RC only. Okay, great. And how did you fare at this on this one? Good. And who else on this side? From this side? Yes, please. It was tougher side. Okay. Okay. Do you agree? Did you see the paper 2023? Any of you who have seen 23 paper? Same issue. Same point of view you have. Okay. All right. So coming to the point, first of all, you need to understand certain rules, the thumb rules for this section. Number one is that the answer should not be influenced by your own knowledge on the subject. That's a very basic thing. If it is not given in the passage, it cannot be your answer, no matter how much you believe in the fact given in the option. So always the answer should be given on the basis of the passage. ये phrase वो बार-बार लिखते नहीं है क्योंकि बार-बार लिखेंगे कि your answer should only be based on the passage, तो ऐसा नहीं बार-बार लिखेंगे, लेकिन it goes without saying. Okay, so that is the very first rule. The second rule is that when you are evaluating the options,
मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ स्टूडेंट्स, बताऊँ आपको मैं, बिकॉज आई नो दैट एवरीबडी इज एबल टू रीड. सब ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे किसी को कोई रीडिंग नहीं सिखाएगा, बिकॉज रीडिंग मीन्स दैट द लैंग्वेज यू ऑलरेडी नो, द ग्रामर, द वोकैब, द एक्सप्रेशंस यू अंडरस्टैंड. अब बात आती है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन जो इवैल्यूएट करते हैं, तो दे जनरली द प्रॉब्लम अराइजेस हियर इन द क्वेश्चन सेक्शन. एंड देन थर्ड पार्ट इज योर ऑप्शंस. अगर आपको ये दोनों पार्ट हटा दिया जाए, and if anybody is asked, have you understood the passage? Of course you will understand that, because the passages are on the very regular topics. पेपर 1 में आपने जो पढ़ा है वही सारा यहाँ होता है, एनवायरमेंट, वही मार्केट एंड इकोनॉमी, एंड रादर ऑन द इजियर साइड. तो 4-5 लाइन के पैसेज में कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी कोर एंड वेरी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टाइप ऑफ थ्योरी तो नहीं एक्सप्लेन होती है. सो द टॉपिक्स आर फैमिलियर. इट इज ओनली द क्वेश्चन. And about the question, it is like every question demands a particular type of answer. So the nuanced information that is required by the question, that should be clear. आपको पता हो कि एक assumption की information कैसे अलग होगी एक main idea के question से, और एक inference कैसे different होगा from an implication question. So there arises a problem, यानी question is an issue. And the third thing is that options. When you go to the options, if something or the other is appealing to you, you do not think twice. As they say that the fish, there's a saying in English that a fish sees only the bait, never the hook. तो आपको भी वही दिखता है, आपको वो कांटा नहीं दिखता जिसमें वो चारा लगा हुआ है, जैसे फिश को नहीं दिखता. तो ऑप्शन जो है वो आपको कहीं से भी अपील किया किसी सेंस में, मे बी इट अपील्स टू योर प्रीवियस नॉलेज, मे बी एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट यू हैव, कहीं से कोई कनेक्शन आपने पैसेज से बना लिया, एंड दैट्स व्हाई यू गो फॉर विद द ऑप्शन. सो बिफोर दैट यू नीड टू बी क्लियर वेदर द चोजन ऑप्शन इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन और नॉट. इट साउंड्स वेरी सिली कि सर ग्रेजुएशन वाले लेवल के स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि आंसर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में हो, बट बिलीव मी आप फिर भी गड़बड़ हो जाती है. और आपको मैं दिखाऊंगा, आई विल शो यू द क्वेश्चंस, राइट. सो फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, दैट questions and its understanding as and when I discuss the nitty-gritty of the question, the details of the question and the options and evaluation there. You should be good at that. Rest, this reading part, ये तो आपका है एरिया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है. However, I will discuss with you skimming करना, ये एक important point है. But since so I'll come to this skimming for reading after a while. Before I give you some factual details of RC section. क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया, या दे डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ आरसी सेक्शन इन पर्टिकुलर. सो आरसी सेक्शन जनरली number of passages and number of questions. ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें यूपीएससी ने कोई चेंजेस नहीं किए. मैथ्स में भी दे हैव इंट्रोड्यूस चेंजेस. कभी ऐसा हुआ 2012 या 13 में कि 1-2 क्वेश्चंस कर दिए, 12 या 13 में से किसी एक साल में ऐसा हुआ था. However, RC section has remained the same. Same, I mean the number of questions जो इसका वेटेज है पूरे पेपर का, that is almost 33 to 35%. तो number of questions you may expect minimum 24 questions to maximum 30 questions. ये रेंज है जो अभी तक आई है अलग अलग सालों में. तो डिफरेंट ईयर्स का डेटा नहीं लिख करके मैं एक जगह एक रेंज आपको बता रहा हूं, 24 to 30. And number of passages have been, generally they give 20 plus passages. कभी कभी 1-2 बार चेंजेस किए हैं. So if you expect that 20 plus passages generally. हाँ, अभी इस बार क्या किया इन्होंने, 18 passages दे दिए. In the year 2022 they gave 15 passages. तो 1-2 बार कभी थोड़ा सा बहुत आगे पीछे कर देते हैं number of passages, but otherwise it is 20 plus. तो यूपीएससी tries to give you one passage, one question kind of scenario. इस बार थोड़ा generous रहा यूपीएससी. They gave, I think, for more than 50% of the passages, there were 2 questions based on 1 para. अच्छा, 1 passage, 1 question, ये आपको कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए? If on 1 passage you have 3 questions, and then we have 1 passage and 1 question. In what sense it poses challenge to you? Time taking, yes. So it takes time.
तो अगर आपको एक पैसेज पे बेस ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसका मतलब है दे आर बीइंग जेनरस टू यू, एंड आप आफ्टर सिंगल रीडिंग यू आर फेमिलियर विद द स्टोरी एंड देन यू आर इन अ पोजीशन टू डील विद मोर देन वन क्वेश्चंस। लेकिन हर पैसेज के बाद एक ही क्वेश्चन अगर आता है तो फॉर एवरी सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू अ नेक्स्ट पैसेज, आई मीन न्यू स्टोरी, न्यू एनालिसिस। तो एक ही है, तो दिस मच ऑफ डेटा इज सफिशिएंट व्हिच कम्स आउट टू समवेयर अराउंड 33, मैंने शायद 35 बोला था, 37% तक चला जाता है इस पेपर का वेटेज, सो व्हिच इज अ बिग डील। एंड एज यू नो कि इसमें इट्स वेरी मच विद इन द रीच। Okay, am I audible to the last? So it is very much within the reach of each and every student because ये सब आपने किया है। I think स्कूल में तो आपने कोई 8-10 साल तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही किया है। आंसर वहाँ राइटिंग में करते थे, यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बन गया। Now coming back to this, so अब क्या करेंगे? How will we work on this part? You know, number one, we will discuss the skimming part. That whenever you read, you need to skim the passage. What is skimming? Making shorter. एक आप familiar word है skimmed milk. जानते हैं skimmed milk? हाँ? कोई पी के आए आज? जिसको ये commercial language में toned milk बोलते हैं. Toned. क्या होता है toned में? Fatty material has been taken out. तो वो एक रोटेटर होता है which moves very fast and so the centripetal force that brings the, तो पॉइंट यहाँ ये है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो यू शुड बी गुड एट स्किमिंग। आप इसका मक्खन इसका घी निकालने की क्षमता रखते हो। इट मीन्स द जिस्ट ऑफ द पैसेज, जो पैसेज का जिस्ट है या जो पैसेज का एसेंस है उस पर मिस नहीं होना चाहिए आपसे। यू शुड बी गुड एट दैट। उसके लिए कुछ सर्टेन टूल्स हैं जो आज की क्लास में आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दैट। सो स्किमिंग यू शुड बी गुड एट। बाकी जो बच गया वो सब टोन्ड है पैसेज का। उस पे बेस ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डिटेलिंग बेस कि विच वाज द इंडियन स्टेट दैट अडॉप्टेड दिस पॉलिसी। अब आप जाइए वहां आसाम लिखा हुआ है, लिख दीजिए आंसर में। उसमें तो यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे क्योंकि द पैसेज इज नॉट वेरी लेंथी। तो बेसिकली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्किमिंग। आप चाहे मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो और यू आर गोइंग टू आंसर एन assumption, you need to skim the passage well. Fine. Second and third question and options will come back later on. So what are the certain things related to skimming? कि वो लोग ज्यादा अच्छा करते हैं who are good, who are into this eclectic reading, and reading from different fields. So they develop this number one, their general understanding of the passage, their receptive acumen gets sharpened, their vocab is good. तो इसलिए वो कोई ऐसा इशू नहीं आता। But let me also tell you at the same time that some students mistakenly believe that everything depends on vocab. So if I do not know a couple of words, my comprehension is going to suffer. It's not like that. Always it's not like that. Most of the time, the rest part of the passage helps you to understand the passage well, your language sense. So अगर आपको एक दो वर्ड नहीं पता है तो it's not a big deal. Sometimes that those 2 words or 3 words that you do not know may not be playing any crucial role in the passage. ऐसा हो सकता है। कभी कभी वो डेडली भी हो सकता है, बहुत फेटल होगा कि हो सकता है उसी के सराउंडिंग में सब कुछ हो, राइट? सो वोकैब के पार्ट पे आपका ये एक मिस्टेकन बिलीफ है कि आई शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड, वो एक आइडियल सिचुएशन है। दूसरा, अगर इन जनरल बात की जाती है तो पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में the students think that they should be able to read very fast, just like vocab. It's again an ideal situation. आप बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट आर यू do you have effective reading or not? तो केस पढ़ लिया, वो कोई फॉर्मूला 1 का रेस नहीं हो रहा है, बल्कि ये है कि आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया while reading. Did you notice where the author is heading to? किस डायरेक्शन में पैसेज जा रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ऑथर का जनरल एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द टॉपिक। तो ये सारे पॉइंट्स हैं व्हिच आर पार्ट ऑफ द स्किमिंग। सो इसलिए 2 मिसकॉन्सेप्शन, एक वोकैब आई शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड, एंड सेकंड मिस्टेकन बिलीफ इज दैट आई शुड बी एबल टू रीड वेरी फास्ट। द स्पीड डज मैटर, आई एम नॉट नेगेटिंग इट, हाउएवर इट्स नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल। ठीक, तो सब कुछ ये नहीं है, तो इसका ध्यान रखेंगे। 2 स्पीड के लिए मैं बताऊं कि यूपीएससी के CSAT पैसेजेस डू नॉट पोज बिग चैलेंज टू यू। व्हाई? बिकॉज दे आर 4, 5, 6, 7, 8 लाइंस मैक्सिमम।
1000 वर्ड्स का पैसेज होता तो स्पीड वुड हैव बीन अ बिगर इशू, बट 20+ पैसेजेस में अगर आप इतने सारे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो सर्टेनली स्पीड भी एक सर्टेन लेवल पे होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पेनफुली स्लो। तो उसका एक टेस्ट हम कर लेंगे, क्लास में बताएंगे, बट उससे पहले स्किमिंग के कुछ टूल्स डिस्कस करते हैं। So everybody should have fair idea about the topic and the subtopics that he has read in the passage. What the passage is all about, that's the topic. If the author has divided it into various subpoints, जी इसके कॉज भी बताऊंगा और मैं इसके इफेक्ट भी बताऊंगा, ये प्रॉब्लम डिस्क्राइब करूंगा और इसका सोल्यूशन भी दूंगा, तो ये सारे इसके सब टॉपिक्स हो गए, राइट? सो टॉपिक एंड सब टॉपिक, I'm starting from very basic. Then you must know the structure of the passage. The structure of the passage. What is the purpose of the author? Attitude of the author. Of course on the topic, क्योंकि हम ऑथर के जनरल एटीट्यूड की तो बात नहीं कर सकते, जितना उसने टॉपिक पे बात की, वी ओनली नो दैट मच. Then at smaller level, we know some passages have a topic sentence or a focus sentence. Transition of ideas. And last but not the least, number 7, keywords play a very crucial role. Sometimes there are very overt markers, signs. So these words are those indicators. So I'll start with number 3 first, क्योंकि second थोड़ा सा technical है. Purpose of the author. What seems to be the purpose of the author in the passage? You see, different authors may have different purposes. All writings do not have the same purpose. We all know that. When you write the answer of a question, your purpose is decided by the question itself. You try to, fit in as per the demand of the question. आप उसी के हिसाब से लिखते हैं. When you are writing an essay, actually the title decides the purpose. So your direction is towards that. ठीक? अब purpose of the author, CSAT में तो mostly क्या purpose होता है? Most of the passages have one purpose, where the author is trying to persuade the reader. To persuade him to accept something, to agree with his thought, his idea. His idea, his thought, his opinion. तो इसलिए क्या करता है, वो उस चीज को सिद्ध करने में लग जाता है जो वो कह रहा है, by and large. He tries to prove that. How does he prove that? With the help of with the various arguments, maybe in the form of examples, illustrations. He uses data and fact. आपको अपनी बात समझाने और मनवाने के लिए वो data और facts और logic use करता है. So he uses logic and facts. So most of the passages have this style, where the author tries to convince the reader about a certain opinion. कुछ राइटिंग में पर्पस आपको ये दिखेगा कि ही डज नॉट, कोई मनवाने वाली बात नहीं है, बट ऐसे ही कुछ समझा रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कोई किसी पर्टिकुलर, एंड ही इज गिविंग डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक. तो आपको पढ़ के लगता है कि ये तो डिस्क्रिप्टिव है,
एक पर्टिकुलर टॉपिक है एंड इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. Some authors do not seem to have any specific purpose like the first two, but they are just telling a kind of a story in a sequential flow is there. There is a chronological order in the happenings and events and all. Narrative जैसा कुछ passage. And there are some passages where the author make you learn something, make you learn, make you understand. Persuasive वाले से अलग है. कैसा? Here he tells you how a certain thing is done. Process based. How to do based. तो इसमें वो आपको डूज एंड डोंट्स बताता है. तो अलग अलग ऑथर के अलग अलग पर्पसेस हैं. अब लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन हियर. आप सबने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस, एवरीबडी वन और द अदर टाइम. थोड़े से सीनियर होने के बाद तो नहीं पढ़ते ना, बट व्हेन हाई स्टीम, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी, तो जरूर न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी पढ़ते हैं? दे आर स्टिल रीडिंग इट रिलीजियसली? मेनी. Okay. So when you read the first paper, first page, second page, third page, all the same, what kind of writing style you come across? What kind of purpose is there? उससे connect करिए. अच्छा, purpose of the author, इसको मैं relate करूंगा. I'll tell with the writing style. So just recall. By and large, यहाँ पर आपको एक particular purpose के according the writing style is chosen. According to the purpose, an author chooses the writing style. तो जो मैंने बोला कि majority of the CSAT passages have that persuasive type of style. Persuasive nature होता है. Persuasive to convince you with the help of the logic and the argument, facts and data. Then descriptive. यहां का सारा मुद्दा, सारा पर्पस ये है जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन, राइट, ऑन अ सर्टेन टॉपिक. कुछ अग्री उग्री नहीं कराना है, कोई लॉजिक और आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट इट जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग. तो वेरियस एस्पेक्ट्स और वेरियस फैसेट्स ऑफ द टॉपिक आर कवर्ड हियर. फिर एक राइटिंग मैंने आपको बोला कि नरेटिव जैसी, जिसका कोई खास वो नहीं है, कहानी वानी जैसा, तो सीसैट में तो कम होता है, लेकिन कभी कभी आया है नरेटिव. एंड देन द लास्ट वन आई एक्सप्लेन वाज expository. अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. Those who have read the first pages of the newspaper, first, second, third, which type of writing style you have come across there? By and large, descriptive. What is the purpose? Purpose of the newspaper wala? The purpose is just to update you, give you information of what happened yesterday. चाहे पार्लियामेंट हो या आउट ऑफ द पार्लियामेंट हो. मे बी एन एक्सीडेंट टुक प्लेस और मे बी अ रैली वाज देयर, राइट, एनीथिंग, तो इट जस्ट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑन दैट. अब वो आपका धरना कवर कर रहा है, तो ही विल जस्ट गिव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर थिंग्स, राइट. व्हेन यू गो टू द एडिटोरियल पेजेस, व्हिच राइटिंग स्टाइल यू फाइंड देयर? Persuasive. What is the purpose? Convince. तो एडिटोरियल पेजेस एंड ओपिट का स्टाइल ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड XYZ पॉलिसी. ये होता है फर्स्ट सेकंड पेजेस में कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड XYZ पॉलिसी. बट उस पेज पे आप जाते हैं तो वो बताता है वेदर दिस पॉलिसी विल सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट, इज गुड और बैड. तो ये आपका स्टाइल. तो पर्पस ऑफ द पैसेज ये आपको दिख जाएगा कैसे. आप लैंग्वेज सेंस है, व्हेन यू रीड just focus, go along with the author. देखो, जब आप किसी का speaking और reading and writing and listening, all these four ways of this verbal communication that we have, कहीं non-verbal भी है, so I'm not including that here. So when you are listening to someone, actually you get the message in totality. As a receiver, आप मेरे words भी सुन रहे हैं और मेरी body language भी देख रहे हैं, मेरे gesture और posture भी देख रहे हैं. Writing में ये नहीं है. राइटिंग में देयर आर ओनली टेक्स्ट. तो ये कट गया, माइनस, विजिबल कुछ नहीं है. अब इसको कंपनसेट करने के लिए रीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि ही शुड प्ले एन एक्टिव रोल. एक्टिव रीडिंग. और एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि इवन दोज मार्कर्स आई मीन दोज वर्ड्स दैट वर्क लाइक ए साइनेज, जो आपको बताते हैं कि ऑथर क्या कर रहा है. यहां का एग्जाम्पल दे रहा है, यहां कंक्लूड कर रहा है,
यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट दे रहा है, here he is giving another example, तो he may not use these words, hence, so, similarly, for example, moreover, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो. When they are not there, are you able to read actively and try to establish the coherence, जो logical connectedness है between the sentences or not? तो आपको चैलेंज ये आएगा. इसलिए उस चैलेंज को लिए आपको जरा एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा. When you write, when you are the writer, you also use these markers, these signs, so that your reader, the examiner, should be able to connect with the writing. So as the answer unfolds, तो आप उसको इंडिकेशंस दे देते हो, those indicator words, कि ये. तो इसलिए आप पर्पस ऑफ द ऑथर समझने के लिए आपको ध्यान रखना है what are the type of words that author has used there, and they will give you the idea कि प्रूफ करने की तरफ है ये सिर्फ डिस्क्राइब है, या एक्सपोजिटरी जा रहा है. एक्सपोजिटरी आपको याद है? एक्सपोजिटरी नरेटिव तो एवरीबडी नोज. एक्सपोजिटरी इज दैट where the author is telling you a certain way of doing something. मान लिया आपने सिंपल एक ब्लॉग लिख दिया, ब्लॉग तो खैर दूसरी चीज है, एक पोस्ट डाल दिया कि कैसे हाउ टू फिल द CSC फॉर्म. उसमें आप सारे डूज एंड डोंट्स बताएंगे ना. यू विल मेक योर रीडर अवेयर ऑफ द थिंग्स. तो एनी प्रोसेस explain how a process takes place, the procedural things, the know how to do kind of, उसमें आपको ये मिलेगा. So dear, that is the purpose of the author. ठीक. अब मैं आता हूँ एक दूसरे उस पे. देखिए, when he writes a paragraph of 4-5 lines, CSAT paragraph ले लें, तो अक्सर उसमें क्या होता है कि you will come across a topic or a focus sentence. As the name suggests, the topic or the focus sentence means the sentence that holds the key idea, the main point. जितने पूरा पैराग्राफ का जो कैप्टन है वो कौन है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है पैराग्राफ का. अगर आप ये फोकस करेंगे वर्ड्स पे और उसके इंडिकेटर्स पे, तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि विच सेंटेंस होल्ड्स द ऑथर्स मेन पॉइंट, एंड दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस. Let's have a look at this topic sentence exercise. जरा इस पे फर्स्ट पेज पे देखिए आपका. Look at passage number 1. अच्छा, passage 1. So it says the world faces a serious problem of overpopulation. Right now many people starve from lack of adequate food. आप जैसे ही सेकंड सेंटेंस पे जाते हो, आपका ब्रेन ने एक एस्टैब्लिश आइडेंटिफाई कर लिया कनेक्शन बिटवीन द टू. यहां इन्होंने बताया कि सीरियस प्रॉब्लम वर्ल्ड इज फेसिंग, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, एंड द वेरी सेकंड सेंटेंस हैज गिवन यू दैट प्रॉब्लम. आप कह सकते हैं एक तरह से इलेबोरेट कर दिया प्रॉब्लम को. राइट नाउ मेनी पीपल स्टार्व फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट फूड. Efforts are being made to increase the rate of food production, but the number of people to be fed increases at a faster rate. Overpopulation. तो you find कि मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, बाकी के दोनों सेंटेंस उसके सबऑर्डिनेट है. The rest two sentences are just the subordinate of the first sentence, because the first sentence gives you this problem that the world is facing, that is a problem of overpopulation, and both sentences have tried to help you to believe in the first sentence. So they are used here as a piece of evidence by the author. तो आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया फर्स्ट सेंटेंस, राइट? तो टॉपिक सेंटेंस या फोकस सेंटेंस, इफ इट इज गिवन इन द पैराग्राफ, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं सही या नहीं. आई विल गिव यू 2 पैराग्राफ्स टू आइडेंटिफाई इट.
passage number 5, and then passage number 6. Passage number 6 challenging है, it's a CSAT passage. 5 तो आप निकाल दोगे. Kunal, I will answer this expository question once you have done this passage 5. If it is not there in Telegram, it must be there. You just go and search it properly. However, you can follow it through the screen. So have you done 5th one? 5th one is a cakewalk. It's very sharp, persuasive style hai. Author has a certain view and he gives you the data to establish the view. So the topic is here. Testing on animals cannot give us the information we need. This is in order to assess safety for humans. यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद तो उसने फिर आपको सीधा रीजन दे दिया. इस रीजन को आप एविडेंस समझिए या प्रेमाइज, वी कॉल इट टेक्निकली प्रेमाइज. प्रेमाइज is actually the reason given to justify something. So here the author's view is this, and for justification he uses the second part. In the very last part he gives you the example, the direct example, the evidence, this is that. So we all are on the same page so far as passage 5 is concerned. But passage 6 demands active reading. क्योंकि यहाँ कोई because नहीं है. आप देखो ये marker आपके लिए कितना helpful है. This is called marker. This is called a very overt marker. The evidence for this, a marker is given there. But ये CSAT passage में आपको ऐसा कोई sign नहीं मिलेगा. You will have to just yes, this one. Have you gone through? So which sentence you think? The last one? Online students, actually I'll get it done. It should have been sent earlier. So I'll see कि अगर material आपको, by the way, if you are able to read it through this, it's a little long passage. So
Whenever you read a passage, एक क्वेश्चन आपके ये टेलीग्राम पे है नहीं, बता रहे भाई, इनको बताओ कहाँ पे, उसे टाइप कर दो। They are unable to search. यार आईपीएस बन जाओगे, चोर नहीं ढूंढ पाओगे टेलीग्राम पे, तुम्हें मटेरियल नहीं मिल रहा है, बुकलेट, इट्स ऑफ 60 पेजेस, 63 पेजेस। हाँ, तो डियर ये है वहां पर। नाउ whenever you read a passage, you should always start with this question. This question should be on your mind, that what does the author want to convey. ये बात हमेशा याद रखिएगा, और कोई भी पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, what does the author want to convey. अगर ये है तो सर्टेनली आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको टकरा जाएगा पैराग्राफ में कहीं ना कहीं। अगर इसके बिना आप पढ़ रहे हैं तो देन इट्स नॉट, पता नहीं आप क्या चूज कर लेंगे क्या। सो यस, समबडी सेड एट द वेरी एंड, आपने कुछ बताया था, विच सेंटेंस? That's part of explanation. Anyone else who wants to try? Passage number 6, the topic sentence that reveals the author. Yes? Moral? Moral question of how driverless car. बात शुरू कहां से किया है उसने? देखिए, एक जो मैंने आपको बोला था कि ऑथर के पर्पसेस जैसे होते हैं, ऐसी ऑथर की अलग अलग स्टाइल भी होती है, नॉट जस्ट द राइटिंग स्टाइल। सम ऑथर्स लाइक, आप बल्कि ऑथर को मैं फॉर अ सेकेंड आई जस्ट कीप इट असाइड, हम सबकी भी एक आदत होती है ना, सम ऑफ योर फ्रेंड्स मे बी may have this habit to not come to the point straight away, rather they go in a roundabout manner, है ना, एक बहुत ही लंबा चौड़ा सर्कमफ्रेंस पहले क्रिएट करते, फिर आप उनसे कहना मुद्दे पे आओ, सही बात, सीधी डायरेक्ट बोलो क्या चाहते हो, एक जलेबी बनाते हैं पहले ना। So some authors also do that, कि instead of saying the point straight away, they go for the background setting, भूमिका बनाते हैं पहले। कुछ ऑथर सीधे सीधे मुद्दे पे, जैसे पैसेज नंबर 5 में क्या था, सीधे उसका मुद्दा था, टेस्टिंग ड्रग्स ऑन एनिमल्स नॉट सेफ एट द वेरी आउटसेट। यहां ये नहीं कर रहा है, ये इसलिए चैलेंजिंग है, बट ही हैज स्टार्टेड विद दिस, दैट इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब आफ्टर द हाइफन उसने बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिए कमोडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के, फॉर अनदर 2 लाइन्स। रीडिंग स्पीड इंहांस करने के लिए कभी भी एग्जाम्पल को वर्ड टू वर्ड मत पढ़िए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट द सेंस, द आइडिया, तो जस्ट हैव अ कस्टमरी ग्लांस। ये सारे कमोडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में उदाहरण है, ड्राइवरलेस कार एंड ऑल दैट। उसका ओपिनियन है, दिस विल पोज conundrums. Will it be helpful? Will it only only have the help side to actually, this increasing technology, commodification of technology will only help the human beings and it will be like a cakewalk that you just reap the benefits? No, he's saying no. This will pose conundrums. तो शायद प्रॉब्लम conundrums की वजह से आ गई। Conundrums means? Conundrums? Chaos, confusion, very good. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ऐसी चीज जो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करे, उसको कहते हैं कोनंड्रम। तो कमोडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट इट इज गोइंग टू डू, कॉम्प्लेक्सिटी इट विल क्रिएट। और आप देखो कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी उसने आपको बयान कर दी है, क्वेश्चन मार्क लगा लगा। तो आप समझ गए ड्राइवरलेस कार का रोल क्या है यार, इट इज ओनली पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। A driverless car has only been used by the author to explain his point, to drive home his point. That is, it will pose conundrums. तो आप सीधा आपका सेंटेंस वहां पर है, ये it reveals the author's point of view. ये पूरा elaboration है, explanation है. So topic sentence is this one. इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था मैंने जब आप इसको कर रहे थे, that also look at the attitude of the author. इस एटीट्यूड को क्या कहते हैं, दिस द जनरल, नाउ आई रिमूव दिस राइटिंग स्टाइल, यू हैव ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द मटेरियल। सो डियर,
attitude, when you start reading the paragraph, the general attitude of the author on the topic, you identify that. Attitude is what? What he feels about something, your point of view about something. It's of liking or disliking. It is he's being critical about something or he's only going gaga over something, right? ये हो गया attitude उसका. इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे जो ऑथर का एटीट्यूड है वो वर्ड कोनंड्रम शो कर देता है. इस एटीट्यूड को आप कहते हैं, एक वर्ड है टोन. इन ह्यूमन वॉइस, इफ आई टॉक अबाउट ओनली वॉइस, this modulation of voice or high pitch or low pitch or stress or stretch reveals, this kind of expression reveal the human emotions behind that. तो बोलने में तो आप पकड़ लेते हैं कि जिसने मुझे बुलाया तो ये फ्रेंडली है या एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, एरोगेंट है. राइटर कैसे पकड़ेंगे उसके एटीट्यूड को? थ्रू द वर्ड्स. और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, वो आपको आइडिया दे देंगे कि ऑथर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या सोच रहा है, उसका जनरल एटीट्यूड क्या है, यानी उसका टोन क्या है. सो वन शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द टोन, राइट? So driverless car was used, and increasing commodification technology is going to pose some challenges, some threats in future. But वो ये नहीं कह रहा कि we are not supposed to embrace this commodification of technology. He's not saying it at all. Posing the challenges and threats does not mean we just turn it off. It also means, unless the author says it clearly, it also means that you be ready to give the answers, right? तो खैर वो एक अलग. अब आइए टोन पे. तो टोन कैसे होती है? ह्यूमन इमोशंस जितने हैं उतने टोन्स हैं. जितनी तरह की फीलिंग्स और इमोशंस आप जानते हैं उतनी तरह के टोन्स हैं. Two mother tones are objective tone and subjective tone. When you write your answers, which tone you use by and large commonly? Objective tone. Objective tone वो होती है जिसमें कोई पर्सनल एलिमेंट नहीं काम करता है. It's detached from my own preferences and liking and dislikings, my own inclinations, political, social, religious, कोई भी नहीं. You are just saying the points on the basis of the facts and the logic. ये होती है ऑब्जेक्टिव टोन. मोस्ट ऑफ द पैसेजेस आपको यूपीएससी सीसैट के ऑब्जेक्टिव टोन में ही मिलेंगे, लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिविटी भी होती है, राइट? सो व्हाट इज सब्जेक्टिव? विद द पर्सनल एलिमेंट इज इन्वॉल्व. अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है एनीवे. तो टोन का यहां पर वैसे सीसैट ने अभी तक नॉट अ सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड जिसमें पूछा जाए व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द अबव पैसेज. दूसरे एग्जाम्स में आते हैं. Tone plays a very important role in reading comprehension section. So I just, urge you to pay attention to this side. Whenever you are reading, pay attention to the adjectives and adverbs that the author has used. It will give the clear idea about the stand. हाँ, तो वो लेफ्टिस्ट है लिखने वाला कि राइटिस्ट है या न्यूट्रल है या ही इज अ सोशलिस्ट, क्या है, किस तरह की विचारधारा है उसकी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको थोड़ी देर कैच कर लेते हैं. सो दैट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस. एक वर्ड होता है टेनर. टोन के साथ ही कई बार यूज होता है, द टोन एंड टेनर. टेनर वैसे टेक्निकली बोलते हैं वो जो मेल वॉइस है जो बहुत लाउड गा रही है किसी भी सॉन्ग, उसमें उसको टेनर कहते हैं. यहां टेनर का मेटाफोरिकल सेंस यूज कर रहा है. मेटाफोरिकल सेंस इन दिस सेंस कि जो वहां तेजी है वॉइस का, जो उसी के हिसाब से ऑथर का जो इमोशन है, हाउ इंटेंस ही हैज दैट फीलिंग और इमोशन. Whatever emotion he is exhibiting in the passage, you can identify that and you say that okay, ये ऑथर का अपना एक टोन है. लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है? For example, let's say that an author is upset about something, certain developments, और आप उसके पैसेज को पढ़ के कह सकते हैं साहब ये upset, he is disappointed, he is upset or maybe annoyed. आसपास के वर्ड हैं लेकिन बहुत माइल्ड है. But after reading the paragraph, you say, no, this author is furious on this topic.
Furious about this thing. He's enraged. देखिए फीलिंग वही चल रही है, गुस्से वाली. वहां अपसेट था और यहाँ फ्यूरियस है. तो उसी डायमेंशन पे है, लेकिन द इंटेंसिटी हैज गॉन अप. द ऑथर इज फीलिंग डिलाइटेड अबाउट समथिंग, इज प्लीज्ड, माइल्ड फीलिंग. लेकिन इफ ही इज एक्सटैटिक, इफ ही इज लॉडेटरी, तो फिर फीलिंग इंक्रीज हो गई. तो हर उसका तो टेनर एक्चुअली वो इंटेंसिटी शो करने के लिए है, राइट? तो टोन एंड टेनर बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ स्किमिंग के लिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हैं. विल कम टू दैट पार्ट. हाउएवर ये कुछ देर में ले लेंगे उसको. टॉपिक सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. टॉपिक एंड फोकस सेंटेंस, राइट? ट्रांजिशन ऑफ आइडियाज. A reader needs to be very sensitive. What is transition? It is when the author moves from one aspect of the topic, one facet of the topic to another facet. It's called a transition. अब पता ऑथर ने सारी की सारी प्रॉब्लम इशू डिस्कस कर लिया और अब वो सीधे सोल्यूशन बता रहा है और आपने नोटिस ही नहीं किया कि क्या चेंज आ गया. You know, the things which are passing under your nose should be noticed then and there. So as and when you notice that the author is moving from one subtopic to another, आपको भी वो नोटिस करना है. तो पहले सबसे पहले उसने बात बताई आपको इस पैसेज में कि द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वी विल सी इन द फ्यूचर. उसके एग्जांपल्स आ गए. एग्जांपल के बाद उसका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड देन ही गोज इनटू द एलैबोरेशन ऑफ दैट, हाउ द कॉनोड्रम्स विल बी देयर. सो दीज एलिमेंट्स मस्ट बी नोटिस. अगर ये एलिमेंट्स आप नोटिस करते हैं तो फिर आप देखिए टेस्टिंग ड्रग्स विल नॉट बी सेफ. व्हाई? द रीजन. Then next and last sentence, the evidence of this that some drugs which are safe in animal tests have been harmful to humans. Direct example. And that aspirin and penicillin, these are safe for human beings, are poisonous to cats, the animals. नहीं vice versa में चला गया. तो कहाँ पर आइडिया है ऑथर का, कहाँ उसका एक्सप्लेनेशन है, कहाँ पर एग्जाम्पल है, कहाँ प्रॉब्लम है, वेयर इज द सोल्यूशन, ये सारे का सारा पार्ट जो भी है ये ट्रांजिशंस. We should be able to notice the transitions, right? So आपकी in this booklet we have I want to give you some exercise based on this. Please. Passage 6 का answer. This will pose conundrums. This sentence. This is the topic sentence. You tell me. A writing style I have discussed. So what do you feel? After telling you कि this will pose conundrums. देखो अगर मैं तुम्हें सीधी बात, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टी इज द बेस्ट ड्रिंक और बात यहीं पे खत्म कर दूं, तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ना तो कोई रीजन बताया, ना कोई डेटा बताया, अपनी मनमानी, आपका जजमेंट है, योर पर्सनल व्यू, आई डोंट अग्री विद यू. लेकिन आप आफ्टर टेलिंग यू टी इज द बेस्ट ड्रिंक, देन आई गिव यू द मेडिकल, एज पर द मेडिकल साइंस XYZ एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन एनी ड्रिंक मेक्स इट द मोस्ट सुटेबल फॉर हेल्थ एंड ऑल दीज आर फाउंड इन टी, सो टी इज. अब मैंने क्या किया? परसुएसिव. तो क्या आपको इसने सिर्फ बता के छोड़ दिया कि ये कॉनड्रम करेगा? नहीं, उसने आपको सीधा ले गया, इलैबोरेट्स. तो कौन सी स्टाइल है? परसुएसिव. कौन सी स्टाइल है यहाँ 5 में? परसुएसिव, राइट? और ऊपर नहीं जा रहा हूं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल ट्राई. ठीक है, आंसर बैंक आपको दे दिया, तो आई स्किमिंग मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर लूं. अच्छा, राइटिंग स्टाइल सिंस शी हैज आस्क्ड, तो आई थिंक एक दो पैसेज यहाँ ट्राई कर लीजिए. पैसेज 7, 8, 7, 8, 9, 10, all 4. Arvind, there must be some problem at your end because other students are following it fairly, so some audio issue must be there.
वीडियो इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। मैं दिखाई ना दूं तो आपका कोई खास नुकसान नहीं है, सुनाई देना चाहिए बस ये। Okay, audio buffering. I'll try to get it fixed. Chandan. ऑडियो इशू आ रहा है कुछ। हाँ देखो, बफरिंग बता रहा है। Simran, the question is about the style. Need not to find the topic sentence. वो हो गया। रौनक, we are trying to get it fixed. Hopefully हो जाएगा जल्दी। Done? So पैसेज 7 कौन सा स्टाइल है? परसुएसिव है। वेरी गुड, पहली लाइन से आपको आइडिया लग गया। पैसेज 8 डिस्क्रिप्टिव, ओनली आईफोन इज डिस्क्राइब्ड। 9 हाँ जी, पैसेज 8 कैन बी परसुएसिव। अब आप परसुएड हो रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैं नहीं कह सकता, ऑथर नहीं कर रहा है। iPhone 6 is unexpectedly light. It's characteristic. Hey, why size of its screen is bigger than those of the iPhones that came before. It's thinner and smooth and rounded. So its size and its various traits, characteristics are described here. Stainless steel, the casing comes in whitish color, gold and all that. Persuade क्या कर रहा है? आप ये कह सकते हो कि सर मैं इसको पढ़ के जा रहा हूँ लेने अभी. But it is not saying that you must buy an iPhone because of all these things. Had it mentioned that part, तो आप कह सकते थे सर persuade कर रहा है, persuasive है ना? So it's only descriptive, describing various facets of iPhone. Passage number 9 कुछ बताने जा रहा है क्या बनाना है आपको, कैसे है. So first make sure you have all of the ingredients and then so expository होने जा रहा है ये, ठीक. And the last one is narrative. ठीक है, बहुत बढ़िया. केक वॉक जैसे क्वेश्चंस है, थोड़ा सा बस इसके भी के ये टूल्स कंप्लीट कर लूं, देन आई विल कम टू द क्वेश्चंस, द CSAT क्वेश्चंस. But it's very important to work on the basics first. Let me just read this 6 questions. hard देखिए, you see passage 6 में this will pose conundrums में जो this है, that pronoun stands for the previous sentence that was commodification of technology, इसलिए आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना. एक मैंने आपको ये दिया. दो सेकंड थिंग और एक transition of idea. I'm going to take you through the functions that the sentences play. This exercise I'm not giving you here because just a cakewalk. ये सिर्फ आपको एक tone identify करना है of the speaker, which is very easy for you. So I'm going to take you to the exercise, to a particular type of question. ठीक है, आई वॉज डिस्कसिंग ट्रांजिशन ऑफ. तो अभी तक आप दो चीज आ गए, ट्रांजिशन सेंटेंस है और एक टॉपिक और फोकस सेंटेंस है. ट्रांजिशन ऑफ आइडिया व्हेन द ऑथर मूव्स फ्रॉम वन टू अनदर. ट्रांजिशन सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? ट्रांजिशन सेंटेंस इज दैट समटाइम्स एन ऑथर राइट्स
a sentence which tells you about what is upcoming. So suppose he has been discussed the X, some subtopic, and then before going to Y, he writes here a sentence that bridges the gap between the two. This sentence is called the transition sentence. Author ने अगर ये transition sentence है, जो बहुत simple सा point है, but don't expect कि in all type of paragraphs you will come across a transition sentence. कहीं होगा, कहीं नहीं हो सकता है. ठीक है? तो ये paragraph में I'm just trying to show you that each sentence has a certain function to play, certain role to play, जिसको आप identify करते हैं coherence से. Coherence and cohesion, these two words you remember, they are very important because in the writing, the logical connectedness, the logical compatibility that what will come, what will follow a particular sentence. As a reader, when we are reading an author, the shadow of the upcoming material, upcoming sentences also are developed here. अगर वो जैसे develop हो रही है और आपको वैसे ही लिखा हुआ आगे मिल रहा है, it means the writer is very good. He's predictable. Predictable in this sense because he's using a very structured format to write his points. There is an order in it. जिन राइटर्स के उसमें ऑर्डर आपको नहीं मिलता है, वो प्रॉब्लम है. मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं कि व्हेन यू राइट एन आंसर टू अ गिवन क्वेश्चन एंड सपोज देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड, देन योर रीडर, द एग्जामिनर, इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि जो शेडो उसकी बन रही है तो आगे तो कुछ और मिल रहा है, जो कोई थोड़ा इलॉजिकल हो जा रहा है, उसमें कोहेरेंस नहीं है सेंटेंसेस में. तो सेंटेंसेस प्ले अ सर्टेन रोल एंड दैट्स व्हाई द होल पैरा एज अ यूनिट, as an entity, makes the sense. तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज में देखिए, ये पैसेज कहता है कि फॉर दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 9 इन योर शीट, ऑन पेज नंबर 9. Passage number 9 was expository. तो प्लीज फॉलो करते रहिए साथ साथ. ये पैसेज देखिए. For many people, all the frustration they face in their daily lives. अब हमने स्टार्ट किया पैसेज. What does the author want to convey? This is the question on your mind. Yes, please go through the paragraph. Should I? Should I decrease it? Huh? Yes. Increase, it's already 25. Decrease. Increase it. It's getting good. Sure. It doesn't display, but it is 28 now. It's not showing there. Have read? Purpose of the exercise is each sentence has a certain role to play and we need to identify that. skimming कर रहे हैं
एज पर द ऑथर हम उसके साथ हैं या नहीं है, जैसा रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस, आर बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट और नॉट। इसमें एक गैप रहता है और ये गैप नहीं रहना चाहिए रीडिंग पैसेज में, इसलिए बिफोर गोइंग टू सीसैट क्वेश्चन दीज एक्सरसाइजेस आर इंपॉर्टेंट। तो इसने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बता दिया कि मेनी पीपल फेस ऑल प्रेजेंट दे फेस इन द डेली लाइव्स आर रिलीव्ड ऑन द बैटलफील्ड्स ऑफ द रोड। वी ऑल नो दैट, बाहर जाके झगड़े करते हैं, हाँ, फ्रस्ट्रेशन घर का है, बाहर निकाल रहे हैं। एंड देन ही गोज, सेकंड सेंटेंस में क्या स्टार्ट हो गया, डायरेक्ट एग्जांपल्स, राइट, हाउ ऑफन डू वी रीड एंड ऑल दैट टेंडेंसी। And then author at the very end, he says, admittedly, we do have the tendency to take our pent up emotions on others. He acknowledges that. What the last sentence is doing? Yes, please. You. Last sentence. Yes? How is it different from the rest part of the para? Come again? वे फॉरवर्ड। और थोड़ा सा बेटर कर दो, वे फॉरवर्ड तो आपका अपना उसमें सही है, यहाँ कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज करिए, कैन यू? सोल्यूशन, रिकमेंडेशन, आरएक्स, ऑथर का आरएक्स ये कभी मिस नहीं करना है आपको, जो उसका मंत्रा है आरएक्स, ये रिकमेंडेशन है ऑथर का। दैट्स नॉट द गुड वे, दिस इज द गुड वे। एंड देखो कितना फोर्स के साथ बोल रहा है, बट श्योरली अ बेटर वे, श्योरली, राइट। तो नाउ बेटर वे, लास्ट में रिकमेंडेशन आ गया। व्हाट इज द बेटर वे? बेटर वे इज एक्चुअली learn how to control our feelings rather than venting it out, learn how to hold it in. अब sentences इसमें true or false इस तरह के दिए हुए हैं। तो coming to the first part, the first sentence gives the focus or topic of the paragraph, true or false? False, because the first sentence is not the topic. Topic sentence will hold the main point, जिसमें सबसे ज्यादा वजन हो, और सबसे ज्यादा वजन यहाँ किस पार्ट पे? आरएक्स में, जो लास्ट सेंटेंस है, राइट। सो द फर्स्ट सेंटेंस सेट्स द वेरी टर्फ ऑन विच ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट। वो पिच तो आपको दे रहा है कि किस पे बात करने जा रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली क्या कहना क्या है इशू पे, दैट इज गिवन इन द वेरी लास्ट सेंटेंस। सो द फर्स्ट सेंटेंस कैन नॉट बी द टॉपिक, because the most important sentence is the last sentence where the solution is given. So A तो आपने false कर दिया। B को क्या कहेंगे? Online students, B, the purpose of the para is to show how people relieve their frustration. True or false? Purpose का मतलब भी main point है। Yes, very good. It's a solution and the purpose is also the main point. तो main point जो होता है वो आपका ये नहीं है, how people relieve. Various examples are given, 4 और लिख दे तब भी कोई फर्क नहीं, but if the last sentence is not mentioned, the solution is missing, right? अब आपको यहां से पॉइंट क्या याद रखना है कि the solution if given by the author in the paragraph has the highest weightage or most important point, that is, so आप आगे मैं आपको नोट कराऊंगा, वैसे I'm just for your information अभी मैं बता दे रहा हूं इसको कि आपको याद रहे। अगर सीसैट के किसी पैराग्राफ में, पैसेज में, तो ऑथर इज टॉकिंग अबाउट मार्केट एंड इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और एनी अदर इशू, एंड इफ ही हैज डिस्क्राइब्ड देयर वेरियस स्टेप्स टेकन टू ओवरकम अ सर्टेन प्रॉब्लम, बट देयर वर लूप होल्स इन दोज, एंड देन ऑथर गिव्स हिज ओन सॉल्यूशन, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द की आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर, your answer will be the author's recommendation. ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं लेंगे जिसमें ऑथर का रिकमेंडेशन मिसिंग है, नहीं हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको नोट कराने में मुझे यहां से हेल्प मिलेगी, अभी नहीं नोट करा रहा हूं, विल डू दैट। सो हियर आरएक्स मिल गया आपको, सो बी इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट सी, फोर्थ सेंटेंस इज जनरलाइजेशन, जनरल ट्रू और फॉल्स, सी। देखिए, I would urge you to actually solve the paragraph. Try to solve, because you know appetite comes with eating, as they say. So when you get involved, it generates interest. आप दूर बैठे रहेंगे तो थोड़ा ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद नींद आएगी आपको, क्योंकि अभी वन वे चल रहा है। तो डियर ये सी पार्ट जो है इट्स ट्रू, ट्रू, वेरी गुड। डी, द फिफ्थ सेंटेंस इज जजमेंटल, फॉल्स कैसे? फिफ्थ तो लास्ट वाला है, जजमेंटल नहीं है। Fifth sentence is judgmental. No, it's not judgmental.
वो कहता है surely a better way is, तो he is passing a judgment, he is giving his personalized view, it is judgmental. आपसे ये बोल रहा है पांचवा सेंटेंस जजमेंटल, ये नहीं कह रहा ऑथर जजमेंटल है. ऑथर जजमेंटल होता तो फिर आप कहते ये सारे पैसेज के बाहर है, हम तो ऑथर को इतने में मैप नहीं कर सकते the topic that he is talking about. But the very nature, the very instinct of the sentence is judgmental. क्योंकि he says a better, surely a better way to him is this, so he is passing a judgment. D is true. अब क्वेश्चन है जो आपने स्कूल में भी किया है, इन योर प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स में, सब में टाइटल लिखिए, पैराग्राफ और स्टैंजा वाज गिवन. अब बताइए, it says all of the followings are suitable titles. 3 art titles are given. The title should reflect the gist, the main point. Everybody knows that. ऐसा टाइटल जिससे पूरा पैराग्राफ कनेक्ट हो जाए. जी, थर्ड वन. What is the problem in the first one? Relieving frustration. Relieving frustration, can we choose that? Negative क्या होता है? It only represents the first part, various ways people relieve their frustration, but it misses out the author's view, the author's point of view that ये सब गलत है, ऐसे relieve करना, it's not good. It is only saying relieving frustration, जबकि वो controlling की बात कर रहा है, relieving की बात कर नहीं रहा है, तो actually the first option misses out the main point. ठीक है? Coming to second one, the best way to relieve frustration. तो इसका मतलब ई तो फॉल्स हो गया क्योंकि तो all are not suitable titles. First has a loophole, and the best way to relieve frustration. And the last one में तो किसी को डाउट नहीं. Dealing with frustration, yes, dealing with, he has told you how to deal with it. यानी learning to control करना, नियंत्रण करना, ये इसमें ये भी ठीक है. Second is also correct. Why? Because he said the better way, better than all those other ways in which people relieve their frustration. The better way is this: learn to how to control it. So the best way to relieve. I'm so sorry. Relieve. I did not read. No. It's incorrect. It's just a relieve. The author is talking about controlling. So the best way to relieve frustration is actually far away. The only third statement can play the suitable title role. तो आप एक तरह से जो जब जिम जाते हैं तो बिगिनिंग में ही ऐसा नहीं कि सारी एक्सरसाइजेस शुरू हो जाए, हेवी वेट और ये सब, तो ऑफ कोर्स यू वर्क ऑन द स्मॉलर मसल्स, इन द बिगिनिंग यू वर्क ऑन द बिगर मसल्स, फिर धीरे धीरे. तो अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है कि जस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल रोल ऑफ द सेंटेंसेस. मैं आपको दो बहुत इन दिस मॉर्निंग आई केम अक्रॉस ए वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ जो आपको एक आरसी पैसेजेस में, इट्स नॉट ओनली दैट यू आर सॉल्विंग इट फॉर द CSAT sake, purpose of clearing the exam, but actually reading passages enriches your understanding, learning, writing की बहुत सारी चीजें कई बार आपको यहाँ देखते हैं कैसे ऑथर एक्सप्रेस करते हैं उनके पॉइंट को. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेटाफर यूज हियर, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री विद मी क्योंकि ये इतना baboons in trees, ये बहुत सुंदर है. इसमें 7 sentences are given. Each sentence has a certain role to play. So first of all you read this, and nobody should, online students, it's not there in the module, वो material में नहीं मिलेगा आपको, it's not there in the booklet, nor it is there on the Telegram. ये आप स्क्रीन से ही पढ़ेंगे.
You have read it? You can relate with it, huh? We really agree with the thought of the author that this is the way things take place, you know. So there are a few who there. Now, 7 sentences have 7 functional role to play here. वो सबके मिलकर के coherent एक one coherent paragraph has taken the shape. We need to identify the function of each and every sentence here. Options में आपको दिखाता हूँ इसमें. There are a few functions which are actually not there in the paragraph. So let's have a look at the first sentence. Let's use a tree as a vehicle for our explanation, where the tree represents the way of thinking. Right? In this, and then he says some thinkers, and then he goes into the details. Some thinkers have this. Then there are the reckless few, right? So which functional role you can relate with the first one, in case you have not seen the answer? That's the example was typed there, so I just hope nobody has seen that. A to, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं. A to H में the functional role of the first sentence is given. Which letter represents it correctly? अच्छा, giving another example, of course not, because it's not giving another example, so ये तो सिरे से खारिज हो गया. Let's just eliminate the weaker ones. Making a proposal, कुछ सेंस कर रहा है क्योंकि let लिखा हुआ है ना. Let us use a tree. तो आपको शायद लगे कि नहीं, at the first sight I cannot kick it out. चलिए होल्ड करते हैं. Giving a solution, does it give you any solution? Not at all. It does not fit in. Stating a consequence, no consequence is mentioned there, so it's very weak. Drawing a conclusion, a development of the कोई previous sentence है नहीं. It is the very first sentence, so साहब E भी out है. Stating a cause, not at all. A focus or topic sentence or a statement, making sense. H, a contrast. There is no contrast there. अब बताइए B और G में से कौन सा ज्यादा suitable लगता है? G? क्योंकि throughout he has used the tree to convey his point. So making a proposal is actually a generalized one. Though let word is given there, but since he has used the tree to convey his point, so of course this one sets the turf and then rest of the sentences are built on this. So first का answer G सही है आपका. Second में आप देखिए straight away he has taken the plunge to tell you about different type of thinkers. So some thinkers content to stick to the mainstream, stay on the trunk of the tree, while others with a bit more daring move out onto the sturdier boughs. बाऊ बोलते हैं जो स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस होती हैं, थोड़ी बिगर ब्रांचेस, उनको बोलते हैं स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, सो स्टर्डियर बाउस. ओके, तो कुछ तो ऐसा करते हैं कुछ थिंकर्स. एंड देन द रेकलेस फ्यू. अच्छा, दिस इज द थर्ड सेंटेंस. सो फॉर द सेकंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल रोल. Giving another example, another word shows that it is incorrect. Another use कहाँ होता है जब उसके जैसा एक और example हो, तो we actually remove A. Making a proposal, there is no so proposal. Giving a solution. अब बताइए मुझे कौन सा आपको appealing लग रहा है? Yes, which letter you will choose? H, a contrast. Contrast का मतलब होता है contradiction. कोई contradiction नहीं. जो आपको first sentence ने बताया, the second is on the very same dimension. Yes, so what do you say? L. Very good. L is giving example. The examples are there. जो दो example है, तो देखिए plural word. An expansion of the focus sentence. Yes, whatever the tree has been used, and then he goes into. So this L is the functional role of the second sentence. Third one. Some thinkers.
content to stick to the mainstream. It is done. Third one from here. The reckless few. Everybody knows reckless? An adjective? Huh? Positive or negative? Negative. तो author का attitude पता चल गया. ये लोग reckless हैं, right? Not satisfied with sitting complacently on the branches, have to move out to the flimsier twigs and branches. Yes, twigs, very small, very smaller branches. जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? कुछ फुनगी उनगी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हिंदी वर्ड है उसका. बिल्कुल ही. तो कुछ उस पे चले जाते हैं. Some daring ones, the reckless ones. Okay, so the functional role of this, आपको लगता है उसी डायमेंशन पे चल रहा है. So क्या इसमें से कौन सा चूज करेंगे? कंट्रास्ट है क्या इसमें? Contrast is contradiction. अभी तक कुछ contradiction नहीं हो रहा है डियर. Focus or topic, giving a this one is giving another example. Yes, giving another example. कुछ thinkers वैसे और कुछ reckless few हैं. So this is another word is suitable for the third one. Okay, now we have fourth sentence. These are the radical thinkers. The adjective. Everybody knows radical? More towards the extremism, right? The iconoclast. Iconoclasts are those who do not believe in the established norms and rules. तो ये कुछ ज्यादा ही मैवरिक हो जाते हैं. These are the radical thinkers, the iconoclasts, the people who do not fit in. So these इसी का ही related है. The pronoun is used, okay, and I think more characteristics are being described of these reckless ones. तो क्या use करोगे आप यहाँ पर? इस कोई कंट्रास्ट नहीं बोलेगा. हर बार एक कंट्रास्ट आंसर आया है. आई डोंट नो कंट्रास्ट आपको क्यों दिख रहा है. गिविंग अ फुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल. रेकलेस से काम नहीं चला तो ही हैज यूज्ड द वेरियस एडजेक्टिव्स, आइकनोक्लास्ट एंड ऑल दैट. सो ये आपका फुलर एक्सप्लेनेशन आ गया. के राइट, फंक्शनल रोल यू आइडेंटिफाइड. Yes, fifth one. However, they are not the dangerous ones. Words बड़े खतरनाक उनके लिए ऑथर ने यूज किए हैं. They are reckless, they are iconoclast, radical. However, they are not dangerous. इनसे भी ज्यादा घाक कुछ हैं, baboons कुछ और हैं. So, however, they are not dangerous. बिना गए हुए वहां बताइए सबसे ज्यादा कौन सा रोल आपको लग रहा है इसमें? Which function it is doing? Almost every time people said contrast. इस बार वो लोग चुप है जिन्होंने हर बार contrast बोला. ये contrast है. Having used the more disapproving adjectives for them, yet the author is saying they are not the dangerous ones. क्योंकि उनसे dangerous कुछ और है, कोई और है. So this is the contrast. Okay. Finally, you got the answer. Beware the truly menacing type of thinker. The predator who sits like a baboon on the stronger branches, waiting for the twigs to thicken and become stronger. ये है खतरनाक वाले. So ये क्या है? Beware the truly menacing type. क्या यूज करेंगे? Warning. Warning. A warning. Right. So this one is a warning. And now coming to the last one. Once the way has been prepared, it is the baboons who move it, taking credit for and stealing the ideas of those who dare. Once the way has been prepared, they take the credit. Which option you choose? D or E? D is stating a consequence.
Consequence थोड़ा सा अलग चीज हो गई. The E is drawing a conclusion, a development of the previous sentence. ये development है क्योंकि उसमें तो आपको बोल दिया कि they are more dangerous ones, and in what sense, what they do, that is explained in the last sentence. What they do, they actually steal the idea from others. So coming to the point that each sentence has a certain role to play, and it is to the analytical skill of the reader that how he identifies the coherence and cohesion in the paragraph, and then he identifies the sentences which may play any role. It may be a cause, it may be an effect, it may be a solution, the sentence may be a conclusion, the sentence may be an example, the sentence may be just an elaboration or explanation, right? It could play any role, and we should be able to identify that quickly. तो अब जब CSAT का पैसेज आप पढ़ते हैं तो it should be done very quickly. कितना टाइम आपको मिलता है? How much time should be given for each passage in a CSAT paper? How many, I mean, if one question is there, तो आपको उसमें कितना समय मिलना चाहिए? ये एक बहुत बेसिक सा है. I should discuss that first and then move on. देखिए, students are advised to solve 40 to 50 questions out of 80 questions. For 80 questions, you have 120 minutes. For 40 to 50, certainly you have more time. Here, as per 80 to 120, you have 1.5 minutes per question. तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम अगर देखें तो somewhere around 2.5 minutes lump sum you know get per question. क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करते हैं. रिमेनिंग 30 to 40 क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू स्किप, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रीड इट and then you decide whether I should go for it or not. So actually the questions you must target is 40 minimum to 50 maximum. For this 2.5 minutes roughly you get. So in the classroom, अगर अब तो पैसेज हो चाहे मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन, you get only 2.5 minutes. So if there is a paragraph, based on it one question is asked, you should be able to finish that reading, evaluation of the option, and selecting the correct option. ये सारा करने में आपको 2.5 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए. Very rarely, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि maybe the question is very difficult and you spend more time on it, but still the time limit should be, it's very important to know the upper time limit. 3 minutes के ऊपर मत जाने दीजिए. देखिए, if you have spent 7-8 minutes, 5-6 minutes on a question, and somehow you got it, then you are going to compromise with some other questions. 23 में math section was the spoiler. बहुत सारे स्टूडेंट का इसने खराब कर दिया सीसेट. किस लिए? क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था 2-3 मिनट्स में. कुछ स्टूडेंट्स ने 8-10 मिनट्स लगा दिया एक क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो उसका नतीजा क्या हुआ? द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट दे वर अनएबल टू सॉल्व द होल पेपर, एज मेनी क्वेश्चन एज दे शुड हैव अटेम्प्टेड. सो इसलिए टाइम को बहुत ध्यान से रखिए कि आपका कितना समय जा रहा है उसमें. सेम थिंग पैसेज में, इफ यू आर अनएबल टू कंप्लीट सॉल्व इट विद इन 3 मिनट्स, दैट टू इन रेयर केसेस, डोंट सॉल्व इट, लीव इट देन एंड देयर. सो अब ये सारा पार्ट अगर आप इस पे फोकस हैं तो ऑफ कोर्स योर रीडिंग इज मोर इफेक्टिव. इफ यू आर जस्ट रीडिंग एंड विदाउट आइडेंटिफाइंग द नेचर, द इंस्टिंक्ट ऑफ सेंटेंसेस, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. On the very same track, we have these paragraphs given in the sheet. जो बिगिनिंग की क्लास है इसमें मैंने बहुत सिंपल से ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, where you need to identify the transition and all. तो यहाँ let's take this passage number 6 on page number 9 in your booklet.
Done? So A part, author wrote the para to show the effects of too many data on people's ability to work. True? The effect is shown in the second half part. The causes are shown in the first part. Para is purely descriptive. False. ये एंड पैरा जैसा टाइप होता है. देखिए, अच्छा डिस्कशन बाद में कुछ करूंगा इसका. Let me not digress. C. The author wrote the para to give examples of the different types of data the people receive. अगर ये पर्पस नहीं, डेटा का एग्जाम्पल है, only example, the effect part is missing, so it's false. C is false. D is not a transition sentence. Actually, it's a transition sentence, so D is false. Text is basically a list paragraph. अब what is a list paragraph? ये बात अभी डिस्कस नहीं हुई, तो अभी इसको जाने देते हैं. I'll explain the list paragraph. Let's come to F part. The writer has organized the para around the principle of cause and effect. Yes? True. So if is true, cause and effect we can identify. The structure is cause and effect. Last, G. Repercussions are gave acts as a divider between the two parts of the text. Yes, between the cause and effect, it is the divider. So it is true. H. The third sentence gives the focus. Third sentence is only an example sentence. Can it be a focus? An example can never be the focus sentence. Example का तो काम सिर्फ थोड़ा सा एक चीजों को और elaborate करना है, तो H is false. Only one of the following titles is suitable. Only one is suitable. It is saying so. तो पहले बताइए true है कि false है? I. The claim, the statement itself is true or false? True. तो पहले title evaluate करके आना पड़ेगा. First title, overwhelmed by data. True. Does it represent the crux? No. What is overwhelm? When you have more than that you can handle, any type of emotion, feeling, any kind of intensity, वो खुशी, गमी, शॉक, हॉरर, किसी भी तरह की हो, सब में overwhelm यूज होता है, right? तो overwhelmed by data, doesn't it represent the effect part? इसमें cause भी आ गया, data is the cause, and effect part is the overwhelming. People do not know how to deal with it. That's the reason that उसका consequence ये है कि they are unable to work normally. Their grasping power has gone down because they are bombarded with the data. So ये first तो making sense क्योंकि effect भी include आ रहा है, intact है, और दूसरा data तो mention ही है, that is a cause part is also a title should reflect both. Second, the effects of too much information, obviously given that effect is mentioned there in the passage. It also makes sense. So first and second are suitable title because they represent the crux. What about the third one? Increasing amounts of data. Increasing amounts of data does not give you any whiff of information about the effect. Increasing amount of data, ये साहब फायदे की बात है, नुकसान का सौदा है, क्या है? You do not get any idea about that. You only get it confined to that the increasing amount of data is there. People are bombarded with information. But how does it affect them is totally missing from this, from the third one. So third तो नहीं हो सकता. Whereas the first and second represent that effect part, the consequence part. तो इसलिए ये दोनों they make sense. So only one is false. Okay. Now I have discussed with you the topic, the purpose, the attitude of the author, the topic sentence, the transition of idea. In the previous passage, you have seen the transition sentence also. Structure of the passage. Every standard writing has a certain structure. It is up to the reader to pick it up. So, her written information is supposed to be, or spoken information should be structured, should have a certain pattern, should have a certain format. क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो तभी काम करता है जब चीजें एक स्ट्रक्चर्ड चीज में हो. अगर हेवायर है थोड़ा सा तो फिर वी आर अनेबल टू पिक इट अप. सो वन थिंग गोज विदाउट सेइंग कि जितना सीसैट में आपको पैरा का पैसेज मिलेगा वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है.
तो पहली बात, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, व्हाट इज स्ट्रक्चर इज. एवरीबॉडी नोज आई स्ट्रक्चर. मैं बस ऐसी मुझे बताइए क्या आप समझते हो स्ट्रक्चर से. When you write in a structured format. क्या फॉर्मेट आप जनरली यूज करते हैं when you write the main idea answers? Anyone? What is the problem? हाँ. And its causes, and then the solution. Is it so? कॉजेज हर जगह जरूरत हो सकता है, कॉजेज आए, हो सकता है नहीं आए, कुछ सकता है, वो सब आपका. लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वो शायद बॉडी आर्ग्यूमेंट का पार्ट है. When the body, the main answer, when the arguments you represent, there you may talk about the causes and the effects and the the historical things or other aspects. How do you start when you write? By and large, introduction part, कुछ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट से कुछ सेट करते हैं उसको, तो आप एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, राइट? तो यू गो विद द इंट्रोडक्शन एंड देन यू move to the body where you give the various things as you are mentioning, and then towards the end part you give it a conclusive touch. आप टाटा बाय बाय करने वाले हैं तो abrupt ending ना होनी चाहिए. That's why you write something so that it gives a concrete finishing. आगे की कुछ बात कर दिया, वे फॉरवर्ड कुछ कर दिया, कोई भी बात ब्रीफ हो. और तो ये एक स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर इज एक्चुअली to convey your ideas effectively, you need to follow a certain logical order of writing your subpoints for the sake of clarity. That's called structure. आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने वहां डेफिनेशन दी है, बुकलेट में सब कुछ है इसका, राइट? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इज गिवन देयर. तो स्ट्रक्चर वी नो कि इट्स अ लॉजिकल ऑर्डर ऑफ राइटिंग वेरियस सब टॉपिक्स. एक्चुअली दे जस्ट नॉट कम आउट ऑफ द ब्लू, बट देयर इज अ सीक्वेंस टू दैट. तो पैसेज जब आप पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान दो उसी फंक्शनल रोल जो हमने अभी तक किया, कि एग्जाम्पल है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है. एक्चुअली हाउ द ऑथर इज स्टार्टेड, फिर क्या आया और फिर कहां जा रहा है. कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि एन ऑथर हैज सेड हिज आइडिया. आइडिया मीन्स इट्स नॉट जस्ट कि जो सबसे नॉवल, सबसे बिल्कुल न्यू हो, पहली बार आप सुन रहे हैं, उसको मत समझिएगा आइडिया. वैसे तो आइडिया का मतलब हमारा वही होता है कि कोई आइडिया. ये ऐसा भी आइडिया हो सकता है जो विच इज वेरी रिपीटेडली सेड एंड यूज्ड, बट इन द गिवन पैरा इट इज द आइडिया. आइडिया मीन्स द ओपिनियन, द मेन पॉइंट, what the author wants to say. जैसे उसने बोला टेस्टिंग ड्रग्स ऑन एनिमल्स इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स. दिस इज द आइडिया. जनरली द आइडिया इज होल्ड बाय द टॉपिक सेंटेंस. कभी कभी एक सेंटेंस में मोस्टली होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोर देन वन सेंटेंसेस होल्ड द कंप्लीट आइडिया. सो आइडिया लिख दिया ऑथर ने, देन ही हैज गॉन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आइडिया, एंड देन ही हैज गिवन द एग्जांपल. तो अब याद करिए ड्राइवरलेस कार, उसने बोला दिस पुल पोज कोनेंड्रम्स, ये उसका ओपिनियन है, आइडिया है. फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया, पूरा ऑपरेशन किया उसका, ड्राइवरलेस कार क्या क्या करेगा, और फिर उसके पूरे एग्जांपल्स दिए अलग अलग different countries, what if they are involved and how the things will be, like insurance and how these things, how will they be decided. So structure is the logical order of that. CSAT में आपको कुछ कॉमन स्ट्रक्चर मिलते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है बुकलेट में. अगर आप देखें, what is the page number? 5 पे जाइए. स्ट्रक्चर देखिए, वहां एक वर्ड आया था एंड आई लेफ्ट दैट, आई डिड नॉट डिस्कस. वो भी पार्ट था स्ट्रक्चर का. दैट वाज लिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स. अ लिस्ट पैराग्राफ क्या होता है? इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अ लिस्ट पैराग्राफ इज लाइक एन एंड पैराग्राफ. कुछ पैराग्राफ एंड वाले होते हैं. एंड का मतलब दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, लाइक डिस्क्रिप्टिव. आईफोन, तो आईफोन के फीचर्स बता रहा है, कभी उसकी स्क्रीन की बात करता है, कभी उसके केस की बात करता है, उस कौन कौन से शेड्स में अवेलेबल है, मे बी टेक्नोलॉजी बताता है, मे बी प्राइस बता दिया. डिस्क्रिप्टिव. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी हम शॉर्ट फॉर्म में इफ यू से एंड पैराग्राफ टाइप.
राइट? एक होता है बट पैराग्राफ। तो बट से यू कैन रिलेट कि यहां पर ऑथर का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो ही सेइंग द नॉर्म्स इज डिस्क्राइबिंग, बट देन वो हाउएवर में जाएगा, बट यूज करेगा, ही विल इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, फिर वो अपना कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। तो ये नेचर को ध्यान में रखिए, ये स्ट्रक्चर्स देखिए। सपोज द ऑथर हैज गिवन इशू और प्रॉब्लम and then he has given the solution. It's the most common CSAT structure is this first one. Issue or problem, solution. But don't expect कि हमेशा solution दिया हो, कभी ऐसा हो सकता है कि he has only described the issue, not given any solution, right? तो कोई चीज बहुत मैथमेटिकल सेंस में मत लीजिएगा कि सर ने ये बताया तो ये एज इट इज यहां होगा। इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट इज द लैंग्वेज। यहां सब कुछ एक लिंग्विस्टिक सेंस में उस थोड़ा सा उसके रियल से कभी बाहर भी जाती है, कभी अंदर भी रहती है। तो इशू और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, एंड आई टोल्ड यू सोल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। He says कि daily some people have this tendency to vent out their pent up emotions. Then he gives the examples and then he gives the solution. Okay, better ways to learn how to control these feelings. So solution, cause and effect, needless to describe, you already know. ये भी एक structure अभी just we have seen bombardment of various pieces of information and its effect on people, receptive acumen. Idea explanation example, self explanatory, एक विचार, उसकी फिर व्याख्या, उसका उदाहरण। कभी कभी बीच में हो सकता है व्याख्या नहीं हो, सिर्फ उदाहरण हो, ऐसा भी आ सकता है। ओके, लिस्ट ऑफ आइटम्स आई हैव जस्ट डिस्क्राइब। इसमें आप जो कहानी शुरू करेंगे जनरली डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा और वो बताएगा एंड दिस एंड दिस एंड दैट। ओके, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ दिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड द 4th एंड 5th एंड 6th। ये है लिस्ट। लिस्ट आपको बहुत कम मिलता है, या सच है इसके बाद कई बार आप लिस्ट लिख देते हैं। These products such as, and then you mention the number, various examples you give. So list of items, generalization qualification. इसको qualification को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो रहा है, तो आई राइट हियर स्पेसिफिक। कई बार आपको जनरल टू स्पेसिफिक वाला स्ट्रक्चर मिलता है, इसको समझने की जरूरत है। जनरल टू स्पेसिफिक में मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात सीधी नहीं कहते हैं मुद्दे की, बल्कि पहले तो जो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हैं और फिर मुद्दे पे आते हैं, है ना। आपसे नोट्स लेने हैं, लेकिन वो पहले वहां नहीं आएगा सीधे कि नोट्स दे दो, तो याद दिलाएगा पास्ट में आपके साथ क्या किया था, कौन से अच्छे काम किए और कैसे आपका वेलविशर है वो। सो मे बी कुछ ऑथर्स जो हैं वो दे डू नॉट राइट स्ट्रेट अवे द पॉइंट, रादर दे फर्स्ट गिव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग्स करने के बाद फिर वो आते हैं। तो इसलिए नहीं, ये जरूरी नहीं है कि द मेन पॉइंट विल ऑलवेज बी देयर एट द वेरी बिगिनिंग। इट्स नॉट अगेन इंपॉर्टेंट रूल दैट द मेन पॉइंट विल ऑलवेज बी एट द वेरी एंड। एक्चुअली इट कुड बी एनीवेयर, बिगिनिंग में हो, एंड में हो, मिडिल में कहीं हो। तो एज आई सेड कि मोस्ट ऑफ द पैसेजेस आर ऑफ पर्सुएसिव नेचर, लेकिन उस पर्सुएशन जिस पार्ट पे कर रहा है, जो मेन पॉइंट है, वो कहीं भी आ सकता है। तो इसलिए जनरलाइजेशन क्वालिफिकेशन में कई बार द स्पेसिफिक पॉइंट इज मेंशन नॉट एट द वेरी आउटसेट, बट ही स्टार्ट्स विद द कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। आप अपनी राइटिंग में भी बहुत बार ऐसा कर चुके होंगे, यू नो। आई जनरली यूज दिस एग्जांपल दैट यू आर राइटिंग ऑन विजडम, लेकिन आप कहानी शुरू करते हो विजडम पर, लिखना आपको क्या है, यू स्टार्ट विद द फेमस स्टोरी ऑफ दैट थर्स्टी क्रो। तो आपने जनरलाइजेशन पहले किया और वो ऐसे घुमा करके फिर आप आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ये जनरलाइजेशन क्वालिफिकेशन है, कई पैसेजेस में मिलेगा, उस टाइम डिस्कस करेंगे। मूविंग टू बात समझ में आ गई 5th की। 6th वाला कंपैरिजन फॉर्मेट। ये कंपैरिजन वाला स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है एंड कैन इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। सिमिलैरिटीज की डिस्कस करेगा या कंट्रास्ट, कॉन्ट्रडिक्शंस को डिस्कस करेगा। 2 थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, 2 सेक्टर्स, दो कंट्रीज की इकोनॉमी, कुछ भी कंपैरिजन में मिल सकता है, और सिमिलैरिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस और बोथ कुड बी प्रेजेंट देयर। 7th इज एनालाइजिंग एंड क्लैरिफाइंग। ये है बट पैराग्राफ। एनालाइजिंग यानी ऑथर विल फर्स्ट बी एनालिटिकल, विल एनालाइज ऑफ व्हाट हैज बीन डन to overcome the problem of population,
So he said the government has taken X step and Y step and Z step, but all these steps have basic flaw. फिर वो flaw बताएगा ये तो दूसरों में तो कमियां निकालेगा पहले और अपना ज्ञान उस मुद्दे पे फिर बाद में देगा. क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है कि ही विल गिव हिज ओन की बट द राइट वे इज दिस. हाउएवर, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि बट पैराग्राफ में ऑथर अपीयर होगा. राइट. सो ये एक एनालाइजिंग क्लैरिफाइंग है. स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? हाँ. The point is that I will give you some questions based on this. However, the more important point is that you start paying attention to structure. जो मैं अगले 4-5 क्वेश्चन आपको दूं उसमें कुछ सही कुछ गलत हो गए वो that does not matter much. What matters that you whenever you read you start paying attention. What is being said? Where is that? What the different elements the author has used there in the para? तो ये पार्ट पूरा स्कीमिंग का इसमें है. लेट मी शो यू सम एनालाइजिंग क्लैरिफाइंग से कुछ एक पैसेज स्टार्ट दिखाता हूं मैं आपको. एंड अच्छा, मीनवाइल यू I'll assign you passage 13 was asked in CSAT paper. So I want you to try passage 11 and 13. Passage 11 and 13. Being bombarded was the author used the word assailed there, means attacked or invaded. So I use the word bombarded. $11 and $13 done. Yes. So for 11, cause and effect. Cause and effect है, लेकिन एक और भी है. Comparison. Actually, comparison ज़्यादा सही है. Cause and effect is present in both sentences, but both are being, both are hanged together with this word, with this marker. Similarly, it means author is trying to draw a parallel between the two industries. How the arrival of one had a negative effect on the other. तो ये कंपैरिजन वाला.
13 में CSAT पैसेज कॉज एंड इफेक्ट लग रहा है आइडिया नहीं, मुझे लग रहा है इसकी दिशा कुछ और बह रही है, इसकी हवा आप पहचानिए इसको। हाँ, द डायरेक्शन विच वन यू हैव चूजन। किसी को कॉज एंड इफेक्ट नहीं लग रहा है? कॉज इफेक्ट कितने लोगों ने चूज किया? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। अब जनरलाइजेशन आप कह रहे हो, क्वालिफिकेशन ओवरऑल देखिएगा, मतलब whenever I discuss this particular structure thing, I keep reminding the students that don't get, it should not have any daunting effect on you कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं। To identify the direction of the whole para, कई बार कई स्ट्रक्चर मिलते जुलते काफी क्लोज आ जाते हैं, but which is the principal one? देखिए इसने बताया कि is the author happy with the schooling? Our schooling system, he is not happy, right? That's why he highlights the loophole in them, that we are not teaching them the reality, the other pertinent questions to their life, and we are just teaching them the, what you have, what have you, kind of, यानी इसी तरह के सारे subjects पढ़ा रहे हैं. Then what is its effect when they go into the higher education? Its effect is mentioned in the last part. Here she is swept away. When he goes to a university which is an unfettered world, free world, so when here he counters, when he comes across the ideas swept up in turmoil of ideas, influences, and ideologies, for someone who has been discouraged from asking questions and forming an opinion, this transition can be painful. Effect uska bada long last hai. From the schooling, the effect is there in the higher education. So there it may happen. So it's cause and effect की तरफ ज़्यादा है ये passage. So the cause in the schooling, the lacking part is the cause, and then the effect on the higher education. अच्छा, तो cause and effect, और ये थोड़ा सा हो करके आप इसको देख लेंगे. मैं आपको ये but वाला जो था passage, I have got a very good example for that. This paragraph is talking about co-ed schools में क्या उसका benefit है या harm है. When boys and girls are studying together in a school. अब पढ़िए ऑथर को कि ऑथर कहाँ है. I suppose you have read it. Girls, do you agree with the author here? What position she has taken? हाँ? अब स्ट्रक्चर पे आइए. कौन सा स्ट्रक्चर है आपको लग रहा है? This is analyzing and clarifying. Analysis of the belief of a group of people, but they are mistaken. He has already said. And then she clarifies ki how they are wrong. So is the author for co-ed or against it? Against it. Right? Analyzing, clarifying, मिल गया आपको. अच्छा देखिए एक डिवाइडर भी है यहाँ पर. However, मैंने आपको बोला था बट टाइप होगा नेचर, बट पैरा. ये धारणा चल रही है, ये मान्यता है, बट आई बिलीव सो. तो आप कभी उसको ऑथर को नहीं मिस करना कि वो कहां पर है. एंड बिगिनिंग में तो सम पीपल मिस्टेकनली बिलीव, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे गिव यू इंस्टेंट आइडिया कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. मिस्टेकन है सम पीपल. चलिए एक ये स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई किया. ऑन द वेरी सेम टॉपिक अनदर ऑथर, सेग्रीगेशन स्ट्रक्चर.
Done. So this author is has taken a very strong position for co-ed or against? For co-ed, right. और इसका ये मैं जो टेनर की बात कर रहा था कि आप तो टोन तो सब पहचान लें, उसका एटीट्यूड ऑन द टॉपिक इज टोन, बट व्हाट इज द इंटेंसिटी विद विच ही इज फीलिंग अबाउट द टॉपिक. यहां पे कौन सा वर्ड है फर्स्ट लाइन में? वो है ओनली. The segregation of boys and girls at secondary school level only stores a problem. यानी इसमें कोई पॉजिटिव है ही नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम है. कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया, राइट? बहुत एक्सट्रीम सा, थोड़ा रेडिकल टाइप है ना. वैसे जनरली यू विल फाइंड दैट CSAT पैसेजेस हैव अ बैलेंस्ड व्यू. बैलेंस व्यू ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट गोज फ्रॉम हियर द लिंक्स टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन देम. तो एक्सट्रीम वर्ड जो है ना वो आपको बहुत हेल्प करते हैं. दे आर इंडिकेटर्स दैट इफ दे आर प्रेजेंट इन एन ऑप्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट ऑप्शन इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज द ऑथर बाय एंड लार्ज, not hard and fast rule, but by and large they present their ideas in a balanced way, right? There is a sense of balance. वो जो equilibrium है उसको disturb करते हैं कई बार एग्जामिनर, और वो डाल देता है उसमें एक एक्सट्रीम वर्ड. लेकिन अगर ऑथर खुद ही एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा है देन तब तो वो एक्सेप्टेबल है. तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज विद, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द यूट्यूबर्स हु टीच कि 10 मिनट में आप बिना पैसेज पढ़े कैसे आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसे जादुई कुछ बातें बताते हैं. तो उसमें वो यही बताते हैं कि ये ऑप्शन में देखिए ओनली लिखा है, इट्स रॉन्ग, डोंट रीड द पैरा, इट्स रॉन्ग. इट सेज ऑल, इट्स रॉन्ग. इट सेज ऑलवेज, इट्स रॉन्ग. यानी एक्सट्रीम वर्ड्स है. लेकिन जब ऑथर खुद ही एक्सट्रीम पोजीशन ले तो आप ये नहीं, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस रूल कि व्हेनेवर द एक्सट्रीम वर्ड अपीयर्स इन द ऑप्शन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. यू कांट से दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस बट नॉट ऑलवेज. तो एक्सट्रीम पोजीशन में अगर इस पे बेस बना दिया ऑप्शन तो हो सकता है सही भी हो जाए. अच्छा, एनीवे कमिंग टू द स्ट्रक्चर, ओनली स्टोर्स अ प्रॉब्लम. अब क्या प्रॉब्लम है वो सीधे चला गया फर्स्ट ऑफ ऑल. पहली प्रॉब्लम, एक तो इंडिकेटर आपको ये मार्कर जिसको मैं बोला था साइनेज, इसको बहुत ध्यान देखें. ओनली है, फर्स्ट ऑफ ऑल है, फिर उसने लास्ट में आकर के यू कम अक्रॉस अ वर्ड थर्डली. तो पहला बता दिया, थर्डली बता दिया, बीच ही में कहीं सेकंड है, कहीं है, मे बी ही हैज नॉट एक्सप्लेन बट सेकंड चला गया विदाउट मेंशनिंग. तो फर्स्ट ही टेल्स यू दैट इट ओनली स्टोर्स अप प्रॉब्लम्स एंड देन ही मेंशंस दोस प्रॉब्लम्स 1 2 3. जो ऑथर का आइडिया है या जो टॉपिक सेंटेंस है वो कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस होल्ड्स द आइडिया. It only stores a problem for the future. What are those problems is explained here. It means he has given you the explanation and the example. Structure इसका idea, explanation, example है. He straight away अपने point पे आ गया. It only stores a problem. लेकिन जो previous passage author था, that author did not start with his main point. Rather it appeared in the second part, second half में. इसलिए मैंने आपको बोला ये मुश्किल हो जाता है कि फिर कोई fixed position नहीं होती. It may be anywhere. So I want you to try your hands on these exercises given in the first part. Now let me discuss another aspect. अभी RC का questions तो नहीं solve कर रहे हैं, and I think keywords are left, and I will address keywords in tomorrow's class. We have these 3 classes in this week, so that at least we can reach to a certain milestone, and उस पे basic test कर लेंगे. Discuss with you how will I go about it, क्लास का प्लान कैसे रहेगा, शेड्यूल कैसे रहेगा, क्या क्या और अदर एस्पेक्ट्स हैं. आई स्ट्रेट अवे डिस्कस द स्कीमिंग पार्ट. तो आज की क्लास के टेक अवे पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड. वी डिस्कस स्कीमिंग यानी द रीडिंग टू गेट द जिस्ट ऑफ द पैसेज, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ वेरियस टूल्स सच एज द पर्पज ऑफ द ऑथर, द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, द टॉपिक सेंटेंस, the transition, the tone or tenor of the author, what position he has taken, and they bring in effectiveness in our reading. So we have done, in other words, we can say we have done basic reading skills today. मैंने आपको एक भी बात क्वेश्चंस की नहीं की. जो क्वेश्चंस इसमें आए वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई और राइटिंग स्टाइल. आई हैव नॉट डिस्कस्ड द CSAT क्वेश्चंस एज yet. I have not discussed with you the traits of the wrong options.
वो सब हम आगे करेंगे when we start with the questions itself. So some students who have some issues with the language, पहले मैं एड्रेस कर लूं उनके डाउट को, क्योंकि आई एम श्योर दैट सम स्टूडेंट्स मस्ट बी देयर इन द ऑनलाइन मोड आल्सो. RC part depends on two aspects. Number one, and the very basic one, is that language you must know. हिब्रू में ये पैसेज है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, पढ़ना ही नहीं आता, चाइनीज आपको आती नहीं तो आप क्या करेंगे. तो पहली चीज तो आपको लैंग्वेज पता हो. लेकिन जो दूसरी चीज है वो बहुत अहम है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन, एंड दैट इज योर कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस. एबिलिटी. इसी को दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी हाउ यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल रोल ऑफ सेंटेंसेस, the coherence among the sentences, the structure part. You process the given information, you identify the keywords, you identify which position the author has taken on the topic. ये सब ज्यादा बड़ा मुद्दा है बनिस्बत लैंग्वेज के. So इसलिए no student should call it कि मैं इंग्लिश कर रहा हूँ. अभी काफी सारे स्टूडेंट ये कह देते हैं कि इंग्लिश की क्लासेस चल रही है. इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीजें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड यू ग्रामर, नॉट आस्क्ड यू वोकैब? क्योंकि ये सारी डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन है. इसके लिए एसएससी वाला बैठा हुआ है वहां आपके लिए. जब आपको आरसी पूछ देते हैं वो, तो आरसी में एवरीथिंग हैज बीन टेकन इन. इट्स होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स. अब आपको वर्ड आइकोनोक्लास या कोनंड्रम नहीं पता, वो भी अफेक्ट करेगा, और ग्रामर, बेसिक ग्रामर. तो एक्चुअली योर लैंग्वेज ऑन द ग्रामर, द लैंग्वेज ऑन द एक्सप्रेशंस, वोकैब, फ्रेजेस एंड ऑल इज बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू passages. But more important thing is that the basic official aptitude, so far as the language is concerned, the person should be good in terms of analysis. आपका रीजनिंग एबिलिटी कैसा है, ये इसलिए क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, और ऑप्शंस आर रिटन इन सच अ मैनर. सो these two things are there. अब some students who have a history with the language, स्कूल में वीक थे इंग्लिश में, तो वो ये मान के चलते हैं कि आरसी का जो इंग्लिश हो रहा है यहाँ पे भी वो वीक ही है या वीक ही रहेंगे. तो पहली बात है, ये इंग्लिश नहीं है, इसलिए पहले तो आप अपना डर यूज दूर कर देंगे. राइट, डोंट हैव एनी सच एप्रीहेंशन, और वो बैगेज कैरी मत करिए. इट इज वेरी मच, when we talk about the logical question, it is very much based on certain formula. अगर आप एक पैटर्न, एक फॉर्मूला फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. So far as the basic terminology is concerned, वो तो आप पेपर 1 में पढ़ते ही इतना ज्यादा है कि आई थिंक कि आपको इतने सीसैट के पैसेजेस की वोकैब कभी दिक्कत नहीं देगी. और जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दे आर गिवन इन दिस बुकलेट. सो आई वांट यू टू हैव अ लुक एट द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस पैसेज, दिस बुकलेट. उसमें आपकी एक वर्ड लिस्ट दी हुई है ऑफ समवेयर अराउंड 240-250 वर्ड्स आर गिवन देयर. Make sure that you know the meaning of all the words given there. Okay? Write down if you do not know. Online dictionary search करिए, लेकिन लिखिए ये words. आप you cannot be ignorant to these words. And any graduate preparing for CSE, he must be aware of at least 80% of these words at any point of time. Ideally. इसके नीचे भी अगर आपको जा रहा है तो मैं आपको सीधे बता दूं, थर्मामीटर ये कह रहा है कि आपके वोकैब बहुत वीक है. तो then UPSC says that any graduate can clear this exam, तो उसका एक पैरामीटर ये है कि ये such words that are known by a majority, you should also know them. वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, तो लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा. दूसरा, सेकेंड थिंग, आई टोल्ड यू दैट स्पीड मैटर्स. However, it's not everything in CSAT passages. There are certain exams जहाँ पे बहुत लंबे पैसेजेस आते हैं, वहां पे स्पीड becomes more prominent. आपका जितना भी पेपर है, the entire CSAT paper is designed in such a way that your conceptual clarity, whether you have your thinking head on your shoulder or not, your thinking feet ability सब में टेस्ट होती है. इसलिए it's very important that you must be able to identify the author's assertion and the examiner's claim. Author का assertion तो पैसेज में ही है, एग्जामिनर्स के क्लेम्स कहाँ हैं? ऑप्शंस में.
बीच में वो क्वेश्चन है जिसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, द नुएंस इन्फॉर्मेशन। तो आपका ज्यादा पार्ट बहुत बड़े पैसेजेस पढ़ने में नहीं जा रहा है, इसलिए स्पीड बहुत मैटर नहीं कर रही। लेकिन हाउएवर सिंस द नंबर ऑफ द पैसेजेस इज 20 और समटाइम्स 20 प्लस, लाइक इन द ईयर 21 देयर वर 26 पैसेजेस, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप 22 पैसेजेस इफ इन केस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, और इन केस यू आर लाइक हिम हु इज सोली डिपेंडेंट ऑन आरसी पार्ट, तब तो आपको पूरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड एक सर्टेन उस पे लेवल पे होनी चाहिए, जैसे वो कैब में एक सर्टेन लेवल, वैसे यहाँ पे भी। तो आपकी स्पीड कभी आपने मेजर किया नहीं होगा, जस्ट लाइक यू नो योर ब्लड ग्रुप, वैसे आपको अपना स्पीड पता होगा, और वो पता करना है अब आपको WPM, वर्ड्स पर मिनट। ये आपकी क्या स्पीड है, एंड टुमारो यू अपडेट मी ऑन दिस। यू नो, इसको करने के लिए व्हाट यू विल डू दैट, पिक 5 डिफरेंट आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर ले लीजिए, बेस्ट है, लेकिन न्यूज़पेपर का नॉट द फर्स्ट लास्ट पेजेस। स्पोर्ट्स वाला तो तुम ऐसे ही पढ़ दोगे 500 वर्ड 1 मिनट में, कुछ है ही नहीं वहां, नो फूड फॉर थॉट, नो एनालिसिस। तो कौन सा पेज पढ़ेंगे? एडिटोरियल। मार्क 5 डिफरेंट आर्टिकल्स और 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स, 5 अलग अलग चाहिए। सेट द टाइमर फॉर 1 मिनट, स्टार्ट रीडिंग, ऑलवेज हैव अ पेन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, ठीक है? स्टार्ट रीडिंग 1 मिनट जैसे ही हो गया, यू काउंट योर नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव रेड, सारे वर्ड्स काउंट कर लीजिएगा, इवन आर्टिकल्स, ठीक है? कोई इशू नहीं है उसमें। तो लेट्स से दैट आपने पाया कि यू हैव रेड 160 वर्ड्स, go for the second, but for the second reading don't repeat the first one, नहीं तो आपकी स्पीड तो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो always read the new material, उसको पढ़िए। suppose your speed is now 120, maybe 150, maybe 190, maybe 200, कुछ भी ऐसा। 5 रीडिंग्स आपको लेनी है, then divide it by 5, you will get the average WPM, which is जो मीन निकल के आएगा, ये आपको ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा। एक रीडिंग से आपको एक्यूरेट पिक्चर नहीं आएगी। तो मोर और लेस ये आपका WPM है। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू रीड एटलीस्ट 20 प्लस पैसेजेस, 20 पैसेजेस इन दिस पेपर। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की स्पीड मिनिमम 200 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, कंसीडरिंग द प्रेजेंट CSAT। 200 वर्ड्स पर मिनट आपको शायद बहुत बड़ा, अभी तक आपने ट्राई नहीं किया इसलिए बहुत बड़ा लग रहा हो, बट आई थिंक इजीली यू विल बी एबल टू अचीव। इन केस यू आर ट्रेलिंग बिहाइंड, किसी का अगर 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू रिपीट दिस एक्सरसाइज। एक 3-4 बार आप करोगे, योर स्पीड विल गो अप। हाउएवर, दो इट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन साथ होना चाहिए। कोई ये नहीं करके आए बाद में कि सर मैंने, मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो फिर आई एम नॉट just asking to go for a superficial reading. So you have to read and comprehend, and let me know your WPM in tomorrow's class. There are certain points given in the booklet how to enhance your speed. उसको पढ़ लीजिए एक बार रीडिंग करने से पहले। That is given on page number. If you could just update me on page number. एक बॉक्स में लिखा हुआ है reading how to increase your reading speed. There it is, I suppose. Page number 15. On page number 15, the points are written. Okay, so that's it. These two things, vocab part and WPM, you need to work on it. Any doubts if you have? Any questions? या बोर हो गए आप? बहुत ज्यादा बोर हो गए? So officially the class is over. Okay, see you tomorrow. Online students, you stay there, you write your doubts, I'll address it. Narrative beta एक story telling type होता है, and descriptive actually takes a topic and gives you the various details of the topic. ठीक है, it covers different facets of the topic. तो ये descriptive में होता है। Narrative एक कहानी जैसा। तो कुणाल, is the point clear to you? बताइए, आपका कुछ पहले से था। Conundrums.
technology, and you said that this is the topic sentence. But sir, without this line, na, बेटा दिस लिखा हुआ है ना, तो दिस का मतलब यही इसी की बात कर रहा है. अब आप वो कहो कि सर ये कट एंड पेस्ट यहाँ करिए तब मैं मानूंगा. बोल दिस व्हाट इज दिस? Modification, increasing commodification of technology will pose challenges in the future. That's it. okay, so we Right? don't have to like two sentences. Pronouns तो यूज करेगा वो बार बार आप, तो वही बात है. Got it? So when you said na, that about the co-education topic, the first passage, in that there was also like cause and effect. So because Which passage? The first one of like co-education, हाँ in which you said that it was an idea or some idea explanation. हाँ and then हाँ. it was The very first when he says that various problems, it only poses problems. It only poses problems. Segregation of boys and girls. Acha, I'll show you that. Kunal, expository is when the author tells you how to do a certain thing. जैसे आप कोई डिश कुक करना चाहते हो तो आप पढ़ते हो ना उस डिश के बारे में कैसे लिखा होता है. ये कह रहे हो. So वो डिश में आपको डूज एंड डोंट्स बताता है ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. वो इंस्ट्रक्टिव होता है नेचर में. एक्सपोजिटरी इज इंस्ट्रक्टिव इन नेचर. व्हाट इट, इसमें आप क्या कह रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट है. कॉज एंड इफेक्ट जैसा प्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो आप एस्टैब्लिश करें. वो कह रहा है सेग्रीगेशन क्या करता है, इट ओनली स्टोर्स अप प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स आर दीज, द प्रॉब्लम्स आर लिस्टेड हियर. सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस गिव्स यू द ऑथर्स थॉट, द मेन थॉट, द आइडिया, and then it's backed by what are the different types of problems so in future that they are faced. So he says first problem, the third problem, the second problem. तो ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट वो प्रोमिनेंट नहीं. कॉज एंड इफेक्ट कब होता है, जब वो सब कुछ जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको रिलेट करे ले जा करके ही डज अ विजिबल लॉजिकल एफर्ट टू एस्टैब्लिश द लिंक कि ये सब इसके कारण से हो रहा है. वैसा प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है. उसने तो पहले ही मान लिया कि ये सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए कॉज एंड इफेक्ट. इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट. ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको क्या काम है. देखो आप समझो, आप करना क्या चाहते हो आरसी में. जब एज ए रीडर वी आर नॉट सपोज टू, देखो कोई सर्जन अगर किसी का ब्रेन खोलता है तो ये थोड़ी शुरू कर देता है कि मैं इस नहीं चाहता हूँ ये पर्सन का या कोई इंटरनल ऑर्गन कोई और कि इसका ये डिफॉर्मेट, इसका ये थोड़ा सा लीवर का शेप मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको चेंज कर दूं, जबकि वो जा रहा है किडनी को ऑपरेट करने. ही डज नॉट डू दैट ना. वो देखता है बॉडी कैसी है, उसमें क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ सॉर्ट आउट करना. हमारा क्या काम है एज अ सर्जन, वी ओनली रीड कि इस ऑथर ने कैसे चीजें लिखी हुई है. हाउ डज इट कम टू अस व्हेन आई रीड इट ऑब्जेक्टिवली, राइट. इट डज नॉट मीन दैट वी इन्वॉल्व सब्जेक्टिवली. हम कहें कि ये कनेक्शन ऐसे है, हमें देखना है कि उसने कैसे, वो उसका जो लेआउट है वो कैसे है. जस्ट द लेआउट, उसका लेआउट ऐसे हो रहा है कि उसने अपना थॉट बता दिया कि प्रॉब्लम है, और फिर प्रॉब्लम्स आपको बता गिना दिया, ये प्रॉब्लम है साहब, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम. हाँ होता है, होगा. हाँ इसी मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन अगर थोड़ा सा चेंज करके ऐसे वो करता कि वी हैव सीन दैट सम पीपल इन माय ऑफिस, यंग पीपल, दे हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, then some people have this kind of problem, and then some, and then he connects ki I believe that all these problems have the roots in their co-ed secondary school co-ed, they were not part of the co-ed and that's the reason. तो हम कहेंगे ये सब कॉज एंड इफेक्ट है, क्योंकि ऑथर ने ऐसे एक्सप्लोर किया. वो जैसे एक्सप्लोर कर रहा है हमको उसके हिसाब से जानना है, इसलिए ये पैटर्न. So the third sentence is the focus of the paragraph. The third sentence gives the focus of the paragraph. So in this, the first sentence was this till here, because there is no full stop. And second sentence, so there is a comma in between, and then the full stop is here. So do we consider first? नहीं, ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया, सेकंड यहाँ खत्म है, थर्ड तो ये है ना ऑफिस वगैरह फाइंड देमसेल्फ वैसे, ये तो एग्जांपल है. Sorry. हम वो बोला कि मैथ्स थोड़ी वीक है. कौन सा है एग्जाम? सीडीएस. अच्छा, हाँ सीडीएस में थोड़े से लॉन्ग पैसेजेस आते हैं. नहीं सर, वैसे तो मेरे को सीएससी वाली लगे. हाँ अच्छा. मेरा पहला वाला लास्ट टाइम.
So so what you want? तो मेरे को पूछना था इसके अंदर जो पैराग्राफ्स है तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये मत करो, ठीक है, लेंथ से इशू हो जाता है। बेटर देन हम सीएससी से करें ना। तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ पैसेजेस यू हैव पीवाईक्यूज के फॉर्म में, तो क्या जरूरत, पहले ये सब खत्म हो जाता, अब ये सब करिए। ठीक है। तो पीएससी भी एग्जाम एक बार तो इन्होंने रिपीट भी कर दिया था सीडीएस का पैसेज। कुछ क्वेश्चन ऐड के या फिर सीएपीएफ के कोरिलेट करते हैं। इसका आई रिमेंबर एक पैसेज आ गया था 2013 सीसैट में, सीडीएस में पहले पूछ चुके थे, एक पैसेज था। क्वालिफाइंग नहीं था ना, अब क्वालिफाइंग है तो ऑफ कोर्स दे विल इंक्रीज द लेवल। नहीं, शी इज जस्ट अवेयर, मैं भी नहीं दे रहा हूँ जब से। इसको अगेन कोहेरेंस एंड कोहेजन। सो earlier coherence and I don't know whether you are around. Coherence and cohesions are the logical connectedness, है ना। ऑनलाइन डिक्शनरी में एक बार देख लेना इसको। So practice के लिए if you want to use them, I would say no. First you go by with the CSAT passages, ठीक है, उसकी ताकि उसका एक पर्टिकुलर नेचर है ना, उस नेचर, उस आर्ट, उस जॉनर से पहले आप वाकिफ हो जाएं। उसकी वाकफियत के बाद फिर कुछ और करें प्रैक्टिस। जैसे 120 क्वेश्चंस ऑफ द इंग्लिश पेपर होंगे। हाँ, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही बहुत जोर देते हैं, आपका ग्रामर एंड वोकैब। कैसा हुआ बाय द वे? बढ़िया हुआ है ना? सही, अच्छा गया आपका? कैसा गया? मतलब हो जाएगा ये वाला तो लग रहा है। गुड। कंपलसरी इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा इस तरह का आता है। हाँ, जंबल सम यू नो इजी एक्सरसाइजेस आते हैं, जैसे जंबल द वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस रिफॉर्मिंग, एरर्स ट्रांसफॉर्मिंग, एरर, वोकैब भी आता है, इडियम्स भी आता है। तो एडवर्ब I just have only one question. I don't think this is judgmental. I think it is prescriptive. The fourth one is judgmental when he's saying that the फोर्थ वन इज एक्सेप्टिंग, एक्नॉलेजिंग कि हम जो इतने एग्जांपल्स दिए उनको समराइज कर दिया फोर्थ में। But he's just saying ये that last he doesn't one जो take है, out of pent up emotions on others. वी एडमिटेडली, मतलब कह रहा है हमारे अंदर टेंडेंसी, सारे उदाहरण देने के बाद कह रहा है हमारे अंदर। तो आप ये कह दें कि इन उदाहरण का, ऑल दीज एग्जांपल्स दैट ही हैज गिवन हियर प्रीवियसली, ही इज नाउ एक्नॉलेजिंग कि यस दे डू एग्जिस्ट, right? So it's a kind of summarizing sentence of the previous examples, but the last one mein he gives his preference, his own verdict कि better way ये है। But ये सब कर रहे हैं लोग, लेकिन ये better way नहीं है। Which is convincing, but it is Surely judgmental. a better Surely way. is a judgmental. Surely a better way is judgmental. What is judgment? When you give your personalized opinion, right? और फिर उसमें एक वर्ड उसने यूज किया कि बेटर। हाँ, he has prescribed this way to control us. आप एक जजमेंटल यूज करते हैं, द पर्सन इज वेरी जजमेंटल, दैट पर्सन इज वेरी, वहां पे पर्सनालिटी में जब आप यूज करते हैं देन यू यूज इट विद अ नेगेटिव कोनोटेशन, राइट? बट ये सेंटेंस की बात कर रहा है भाई। मैंने बोला था ना कि देखो ये ऑथर को नहीं कह रहा है कि इज द ऑथर जजमेंटल, हम तो नहीं कह सकते, राइट? इस सेंटेंस का नेचर पूछ रहा है कि क्या सेंटेंस का नेचर जजमेंटल है? हाँ जी, सेंटेंस का है, क्योंकि इसी सेंटेंस में उसने बताया कि ये